Good evening, everyone. Thank you for joining. Am I audible? Am I? Yes, you are. Okay, so thank you. Yeah. Okay, so guys, we will start with the briefing first. So as we are starting with the competition tomorrow, so those who have enrolled for the competition, we like to give you a heads up on what should your 10 days look like. See, I want this to be I will say something like an analyst work. You are working with me on a project. See, whether you, okay, just a minute, guys. Okay. Whether you select or not, the question is that 10-day challenge should also be certification type. I can give you certificate saying that this guy has worked with me on a project. See, a selection depends on how you present, how you have written it. But I want you to work for the next 10 days. So tomorrow we are starting from 4th of May, and your end task will be at on Sunday. You have to submit it. You have one weekend, one entire week to do it. Interviews will be lined up depending on how you perform, or I will be taking interviews of all the candidates, whether you have done good, whether I like your report or not. It's not, I want to know how much effort you are putting, because see, at the end, if you are presenting it, चलो कोई चीजें तुमको आती है, कोई चीजें नहीं आती है, बट अगर कोई ओपनिंग्स आती है तुमको जहाँ पे तुम्हारे लेट्स से एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा कुछ है, तो वी विल ऑलवेज रिकमेंड यू. इसके लिए आई विल टेक इन इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज फॉर एवरीवन हु हैव रजिस्टर्ड एंड हु आर एक्चुअली मेकिंग अ रिपोर्ट. तो तुम्हारा इंटरव्यूज वो रिपोर्ट पे ही होगा, रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल मॉडल में. बाकी तुम्हारा इंटरव्यूज मैं ऐसे, मुझे जनरली पूछता नहीं तुम क्या करते हो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दोस ऑल थिंग्स आर नॉट आस्क्ड इन द इंटरव्यूज. ओके, सो गिव यू ब्रीफ. ब्रीफ, अच्छा, उसके पहले एनी डाउट्स, इसको कुछ पूछना है बिफोर आई गिव यू ब्रीफ? उसके बाद आई विल टेल यू वन पेजर कैसे बनाना है. तो जस्ट एनी डाउट्स गाइस? एनी डाउट्स? Okay, fine. So, so what your 10 days should look like? I will give you on word. So, yeah, what is your task? पहले तो what you do is, first of all, first day, let's say Monday है, Monday to Sunday you are working. जब भी कोई रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, the first step is always your financial model. Okay, you have to create your financial model. Financial modeling के videos है. Those who have registered, please DM me your email IDs. I will give you the access of the financial model. Okay, मॉडलिंग के वीडियोस है. तुम पहले कल का दिन, मंडे का दिन, वो वीडियोस देखो. जिनको मॉडल बनाने आता है बेटर, जिनको नहीं आता है प्लीज एक मॉडल बना के रखो विथ डेटा पंचिंग फ्रॉम लास्ट 10 years का डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए. हाँ, अगर कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है तो उसका डेटा DRHP में मिलता है, ड्राफ्ट रेड हेडिंग पर्सपेक्टिव. हाँ, चलेगा, 5 years भी चलेगा इफ द कंपनी इज रिसेंटली लिस्टेड. सैमी होटल्स में सैमी होटल्स नहीं लेना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डूइंग इट. उसके अलावा यू हैव अ चॉइस टू फाइंड एनी कंपनीज इन द सेक्टर जहां पे वेर यू कैन प्रेजेंट योर थीसिस. ओके, नाउ प्रेजेंट योर थीसिस एज इन ऐसी कंपनीज वेर यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. यू हैव नो, तुमने देखा है कंपनी का. मैंने बोला B2B कंपनीज मत लो, मैंने लास्ट ही वीकेंड पे बोला था, लास्ट क्लास में बोला था, डोंट टेक B2B बिजनेसेस. वहां पे डेटा मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. यू विल बी वेरी यू विल इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्विंस मी. मुझे क्या इंटरव्यू को भी. ओके, सो टेक अ सिंपल कंपनी. आई लीव इट टू यू. यूजुअली आई प्रिफर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज लाइक ऑटो, FMCG, रिटेल मतलब हमारे शूज हो गए, फैशन हो गया, समथिंग लाइक दैट. हॉस्पिटैलिटी, ऑटो में सब आ जाएगा. सॉरी, ऑटो में आई कैन टॉक अबाउट टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स के तो ऐसा कोई है नहीं, 4 व्हीलर्स की है कंपनी. FMCG में, अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड FMEG एज वेल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं उसको. एसीज हो गए,
फैंस हो गए, लाइटिंग्स हो गए, घर के वायरिंग, वो सब प्रोडक्ट्स तुम ले सकते हो। कंपनीज विच आर इजी टू प्रेजेंट, एंड आई विल सजेस्ट B2C। B2C कंपनीज लेना। ओके। और एक क्राइटेरिया है, यू शुड नॉट गो बिलो, ठीक है वो चलेगा, यूजुअली यू शुड नॉट गो बिलो 10,000 करोड़ मार्केट कैप। लिख देता हूं मैं, नॉट नॉट टेक अ कंपनी बिलो 10,000 करोड़ मार्केट कैप। उसके नीचे अगर कंपनी ले रहे हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, कोई सुनता नहीं है। 8,000 करोड़, देर आर कंपनीज कहते हैं 8,000 करोड़। नॉट टेक, डू नॉट टेक एनी कंपनीज विच हैज अ मार्केट कैप बिलो 8,000 करोड़ मार्केट कैप। ओके, ये मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, वैसे जो एनरोल। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया, तुमने आज के दिन तुम सिलेक्ट कर लो कौन सी कंपनी चाहिए, क्या चाहिए। यू हैव टू मेक एन, सो मंडे को ये हो गया तुम्हारा करके, फाइनेंशियल मॉडल बना के हो गया। फाइनेंशियल मॉडल बनाने को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे व्हाट आर यू डूइंग इज, ट्यूसडे read the conference calls, read the last 4 conference calls। बिना कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़े रीड और लिसन whatever विथ हाइलाइट्स, ठीक है, विथ हाइलाइट्स। ये तुम अपने रिपोर्ट्स में लिखो या ना लिखो, बट ये हाइलाइट्स मुझे अलग से चाहिए। आई विल आस्क यू व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस 4 कॉन्फ्रेंस कॉल्स। रीड लास्ट 4 कॉन्फ्रेंस कॉल। ट्यूसडे पूरा दिन इसी में जाएगा, 4 कॉन्फ्रेंस कॉल है, 4-5 घंटे लगते हैं उसको रीड, 8 घंटे लगते हैं रीड करने में। ओके, वेनसडे, ये मेरा बताता हूँ कि व्हेन आई वाज टोल्ड टू रिसर्च ऑन अ कंपनी, मैं कैसे करने। ओके, वेनसडे इट विल बी अराउंड, देयर आर टू टाइप्स गाइस, वन इज सेक्टर रिसर्च, वन इज इंडस्ट्री रिसर्च। तुमको किस पे फोकस करना है, सेक्टर रिसर्च या इंडस्ट्री रिसर्च, व्हाट शुड यू फोकस ऑन। सेक्टर रिसर्च, अच्छा, सेक्टर मीन्स ऑटो इज अ सेक्टर, टू व्हीलर इज एन इंडस्ट्री। गाइस इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन हीरो मोटोकॉर्प, okay, तो क्या तुमको 4 व्हीलर्स के बारे में जानना जरूरी है। डू यू need to know about 4 wheelers? Do you need to know about tractors? Do you need to know about commercial vehicles? है क्या ऐसा? Is it? सिया, दिस इज नॉट नेसेसरी। अननेसेसरी जाके ग्लोबल इकोनॉमी, फिर इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में लिखने में कोई नो नो पॉइंट राइटिंग ऑल दोस थिंग्स। आई हैव सीन काफी रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में लिखते हैं, तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिखते हैं, ऑटो सेक्टर के बारे में लिखते हैं। व्हाट यू हैव टू डू विद द ऑटो सेक्टर, तुम कंपनी फॉलो कर रहे हो हीरो मोटोकॉर्प जो स्पेसिफिकली 2 व्हीलर बनाते हैं, तो 2 व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में जो है वो बताओ, मुझे पूरे ऑटो सेक्टर के बारे में क्यों बता रहे हो। So it is never a sector research, it is always an industry research. So वेनसडे को तुम्हारे कंपनी रिसर्च के साथ साथ, कंपनी रिसर्च के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू मेक अ इंडस्ट्री रिसर्च, कि कंपनी क्या करती है, उसके बाद वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अच्छा, जब सिलेक्ट करोगे कोई कंपनी यहाँ पे, तो मैंने बोला है, हाँ, तो पहले ना न्यूज़पेपर पढ़ा करो, रीड न्यूज़पेपर्स। पहले चाहिए तो AI से पूछ लेना, हॉट इंडस्ट्री कौन सी है, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, डेटा पॉइंट्स क्या है रिसेंटली, फिर ही कंपनी चूज करो। रैंडमली बस मुझे अच्छा लगता है इसके लिए चूज नहीं कर। फर्स्ट थिंग आई विल आस्क इन इंटरव्यूज, ये कंपनी चूज क्यों की, तो उसका तो पहले रिसर्च करके रखो। वो पहला क्वेश्चन तो होगा इंटरव्यू, अभी से बोल के रखो, ये So, कंपनी क्यों चूज की। sorry क्या, to interrupt. To what extent in today's time we are expected to use AI? Like, I understand that yesterday we had discussion about that Claude is able to make this in seconds, but हाँ, to have the knowledge, you need to do it and then करेक्ट, compare it with the Claude. So, in this entire challenge, to what extent we are allowed to use the Claude? Because आप जो बोल रहे हो हम Claude से बनाकर आपको दिखा सकते हैं, but दिखा दो। एक्सप्लेन कैसे करना है वो डोमेन नॉलेज पे डिपेंड करेगा। आई करेक्ट, अंडरस्टूड इट, नहीं, बट इफ फॉर एग्जाम्पल इफ वी मेक इट फ्रॉम क्लॉड and if we make some changes according to our domain knowledge,
Is it acceptable in the market in today's time? Not in the challenge. I mean, challenge पे तो बिल्कुल accepted नहीं होगा. But in today's time, if Claude ने हमें जो भी बना के दिया, not only Claude but any AI tool, हम्म to नहीं what नहीं, extent? आई एम नॉट अगेंस्ट यूजिंग एआई. बोलो क्लाउड को, बोलो पूरा रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ, फाइन. द पॉइंट आई टेल यू, डू अ चेंजेस इन दिस, यू शुड बी एबल टू डू इट. क्लाउड तुमको रिपोर्ट बना के नहीं देगा. वर्ड पे दिया है, चल टेल यू, आज ही हमने रिपोर्ट बनाया, शो यू, आज मैंने रिपोर्ट बनाया, ठीक है. दिस इज व्हाट आई हैव मेड इन आवर क्लास. कल लास्ट 2 दिन से हम यही बना रहे हैं. दिस इज लाइक 4 पेज रिपोर्ट मैंने बनाई है, तो भी अभी तक पेंडिंग है. तुम बनाओ ऐसी रिपोर्ट, फाइन. मतलब जैसे ये बनाया मैंने, दिस इज माई इनिशिएटिंग रिपोर्ट, तुम बनाओ. बट द पॉइंट आई टेल यू, डू चेंजेस इन दिस, यू शुड बी एबल टू डू. तो ऐसे अगर क्लाउड तुमको देता है बनाने के, बना के दो. आई एम नॉट अगेंस्ट यूजिंग एआई. एआई तो यूज करना ही है. एंटायरली सही. द पर्पज इज यू हैव टू प्रेजेंट. मैं तुमको उसमें 100% पूछूंगा, क्योंकि अगर तुमने एआई से किया होगा, तुमको आंसर्स नहीं मिलेंगे. नहीं दैट्स आएंगे. इट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो डोमेन हाँ, नॉलेज, इसलिए अभी वो लोग सब लोग जो स्केयर मतलब डरा रहे हैं ना कि एआई आ गया जॉब जाएगा, वो नहीं जाएगा. बिकॉज डोमेन नॉलेज, द मोमेंट समवन इज आस्क्ड टू एक्सप्लेन यू समथिंग, दैट won't happen if you're using that AI. won't happen. Yes, yes. Okay. Because see, investment banking में क्या होता है, I will tell you, investment banking roles are all about presentation. तुम करो ना एआई का यूज, आई डोंट केयर, मतलब करो कुछ भी, रिपोर्ट भी बना दो एआई से. बट अगर आई विल आस्क यू 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, फ्रॉम माय नॉलेज एज वेल. सो आई विल अंडरस्टैंड तुमने कितना रिसर्च किया. बिकॉज ये रिसर्च हम लोग भी गूगल से ही करने के ना. अभी तो एआई है. व्हेन आई यूज्ड टू डू गूगल, नाउ गूगल से अच्छा एआई यूज कर लो. बट द क्वेश्चन इज, ढूंढोगे क्या क्लाउड पे? Sir, I'm a non-commerce background person, so I mean, initially I've started reading much about industry and markets and everything. So, to what extent I should expect things from myself at this point of time? So first is, I will suggest that, sorry, I will tell this expectation is to give me an investment idea. I don't care about valuation and all. मुझे बताओ कि ये कंपनी का सेल्स क्यों बढ़ेगा. Talk about businesses. I don't care whether which background you are from. ठीक है. Industry knowledge मतलब, let's say assume that you are starting a business. I just need to understand how well versed are you with your business model. That's it. Example, I will tell you. Say now we are talking about Sammy. You are saying that you are from non-commerce background. Just tell me, how does an hotel work? एक hotel मतलब the hospitality industry. Taj Hotel example. How does it work? The services it provides to the customers depending on food, the stay, the luxury, the Yeah. basic, that is the basic idea. What is majorly revenue will be coming from which revenue source? Stay or food? What do you think? For Taj? Stay. Stay. Fine. That is what the business model is. Now you have to suggest who are the competitors. Why would I select Taj? Why would people go to Taj? What is going on in the industry? What is the rate of one room of Taj? How many Taj hotels are there in India? Something like that. That is research. Okay, sir. Then Thank you. what is the margins? What are the financial modeling videos I have given you? I will give you. So what is the what does the margins look like? What is the ROE look like? What is the ROC look like? Why it is different between Taj and Oberoi? That's it. That is only research. And Okay. why are you choosing Taj over Oberoi? That's it. Okay. If Thank you you. can present me that, if you can present me, I appreciate it. I don't care whether you know whether you are from commerce or non-commerce background. Even CA, CFS cannot be able to present themselves. It's like that. They have rejected. 4, 5 of my batch has been rejected, who have just joined. Four students I have given them just because they are qualified, all were rejected. So you don't believe that. So you don't think that, sir, I'm not from commerce background, so I will not get it. The more you present. See now this, I will tell you the report that I've made today. It took me 4 hours to make. ये वाला. 4 hours it took me to make everything. I can now, it is all editable. It is all editable. If I want March, I'll just show the Excel file. I have an Excel file. Yeah. This is all my Excel file. All the data points are linked to the Excel file. The point I change it over here, I know where to do the changes. And ढूंढा ये सब मैंने क्लाउड से ढूंढा. ये सब लिखा है मैंने क्लाउड से ढूंढा. But I have reframed in my words. डेटा कहाँ पे रखना है, क्या लिखना है, कितना क्लाउड को पूछना है. This one, okay. So first of all, to ask cloud, I have to read the conference call. No? कि conference call में what are the things I need to write? Or cloud will give you everything. Can you present those things? Like that. Okay. Yeah, Yuk.
Hello. Yeah, yeah. Yes. Sir, actually, I missed the deadline to register for the challenge. So, is there any way I can do it now? You can do it. Yes, yes. I've given the form now. Just fill the form. You can do it. So what is the Just fill it. last like what's the last time that we can enroll? Because I'm falling short of cash. Today, today is the last day because obviously you require 10 days to do it. Today, I mean, at what time till what time? 6 p.m. Like, is that any time No, when? it's fine. It's fine. Once you do, let me know. It's not Sure. as if we are not having our day. See, we are there to help you, nothing else. And the reason we have kept the price is just because others unnecessarily come and they are not interested and unnecessarily they spend the time. That is why we have kept the price. And in that price, obviously, we are giving you an interview preparation. We are giving you a financial modeling videos. That's it. Okay. Otherwise, I don't see. As long as you are working, I am okay. See, I am an analyst. I'm also a tutor. I'm also a professor. So I know students. There are students. There are candidates. So it's up to you. How much efforts are you putting to understand something? Okay. So, which form do I have to fill? Like, I do not have the form link. So 1 second. Let me just share it. You're Uh, not there in the I group view. I searched on your LinkedIn page, but the form was already closed. No. No. Look, 1 second. Just send you the. Yes, you have sent in the chat box. Let me know if you are able to open the form. I think it's opening. Is it opening? Yep. Yes, sir, it's opening, sir. Thank you. Sir, and I also missed the yesterday's session. So, will I be getting a recording of that? So there was nothing specific on the project part. Okay. So it's just there. It's uploaded on the YouTube channel. So you can take that. But Okay. nothing specific was there. You can watch at 1.5x speed. Okay. Anything else? You? No, sir. Thank you. Yeah, fine. Okay. So Wednesday, you read about company research, company, you do a research on company, do a research on industry, specific, which is related to the company research only. Let's say if I'm talking about Taj, for example, Taj is into high-end luxury hotels. So don't go and research about Oyo. I said Indian hospitality market is so big, it is growing at that extent. No, tell me specifically what is happening with the premium hotels. तो मुझे उसके बारे में बात मत करोगे अरे वो ओला सॉरी ओयो रूम्स में क्या हो रहा है देयर आर मोर अनब्रांडेड प्लेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आई वांट टू नो ओनली अबाउट द ब्रांडेड प्लेयर्स अगर वो इफ यू आर लुकिंग एट ताज एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग एट ऑटोमोबाइल सी ऑटोमोबाइल अगर मारुति देख रहे हो तो मारुति में जाके लग्जरी कार सेल्स का रिसर्च मत करो और डोंट डू अ रिसर्च ऑन द होल कि लग्जरी पूरा ऑटो इंडस्ट्री ऐसा है ऑटो इंडस्ट्री इज गोइंग एट 10% 20% यूजलेस रिसर्च do a research on specifically four wheelers अच्छा हमको पता है मारुति when you do a research on Maruti तो मारुति में तुमको समझ में आएगा मारुति sells passenger vehicles four wheelers उसमें भी four wheelers में भी what is the price range it is from 3 lakh to 20 lakhs 20 लाख से महंगी मारुति की कोई गाड़ी नहीं आती तुम जाके महिंद्रा पे रिसर्च मत करो सर एसयूवी में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तुम जाके देखो 15 20 3 से 20 लाख में कौन से वेरिएंट्स है एंड मारुति सबसे ज्यादा क्या बेच रहा है उस पर रिसर्च को उस पर फोकस होना चाहिए इंडस्ट्री रिसर्च. So Wednesday and Thursday probably will be your industry research. Okay. Friday is where you start writing your effort. Friday, Saturday, and Sunday. Okay. Now, whatever research you have done for the last 4 days, you have to put it in one report. The report should start with first page, report writing. Your first page will be investment thesis. Should entirely be as investment thesis. So I'll give you two reports.
वन इज दिस, ये जो मैंने खुद ने बनाया था, ये एक मेरे फ्रेंड ने बनाया, हु इज करंटली वर्किंग विथ एंटिक सिक्योरिटीज का। ये 5th जनवरी, दिस इज द लेटेस्ट वन। नाउ यू सी, दोनों के फॉर्मेट इज सेम। इन्वेस्टमेंट थीसिस, उसके भी इन्वेस्टमेंट थीसिस है, ठीक है। दिस इज इन्वेस्टमेंट थीसिस, ओके। 4 इन्वेस्टमेंट थीसिस मिनिमम यू शुड राइट। 4 इन्वेस्टमेंट थीसिस मिनिमम, ये तो वैल्यूएशन है जो उसने लिखा है। 4 इन्वेस्टमेंट थीसिस, क्विक रिसर्च ऑन इट। इफ यू वांट यू कैन पुट चार्ट्स, ठीक है। नाउ इट इज वन सेकेंड, okay, just a minute. Sorry, guys. Sorry for the inter. Sorry, am I audible now? So sorry, there's some emergency. Guys, am I audible? Yes, sir. Yeah. Sorry. Yeah. Yes, sir. Okay. Yeah. So I was on to it. First page, investment thesis. Investment thesis, mein, there should be 4 points. So your interview should start with saying that why you like the company. Okay. Why you like the company in 4 points. So before saying that, if you see this report carefully, he has just given me a overview of what the company is doing. Acha, when you talk about overview of the company, it should not be something like the company was found in 2010 and uska manager ye tha, uska CEO ye tha, usne aisa kiya, etc. It should be spot on. Maruti is a company who sells four-wheelers, which is in the range of 3 to 10 lakhs, which is top selling models, etc. etc. That's it. कौन से segment में आता है? SUVs, sedans, hatchback in the range of 3 to 10 lakhs. SUVs इतने रेंज में आते हैं, sedans इतने रेंज में आते हैं, इतने मॉडल्स वो ईयर के इतने मॉडल्स वो बिकते हैं. It has a market share of 50-60%, whatever. It should be specific, spot on, with data points. Without data points, your presentation is of no use.
if I give an example, चलो अथर की बात करते हैं. What is Ather doing? So Ather is a two-wheeler, electric two-wheeler company who makes scooters in the range of, let's say, 2 to 3 lakhs. Sorry, 1 to 2 lakhs, in the range of 1 to 2 lakhs. It has three models: Rizza, Ather 600, Ather 580, and I think Ather X. There's some three models. Out of that, Rizza is the top selling models with doing a sales of XYZ amount. Currently, overall, Ather is totally they are selling almost 1 lakh vehicles with a market share of 20%. That's it. That's it. और कुछ नहीं बात करना है उसके बारे में. ओके, अभी वो डेटा पॉइंट्स के लिए तुमको रिसर्च करना होगा. डेटा पॉइंट शुड बी recent data point. It should not be any past data point. Recent मतलब एनुअल रिपोर्ट के FY25 के चलेंगे, बट वी आर ऑलरेडी इन द Q4. पूरा FY26 खत्म हो चुका है, FY26 का एनुअल रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है. सो वेयर डू यू फाइंड दिस डेटा फ्रॉम? आइदर फ्रॉम द पीपीटी, आइदर फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट, बट पहले का डेटा मिलेगा, और यू फाइंड इट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस कॉल्स, और इट्स एआई से पूछ लेना. वो एआई से क्विकली मिल जाएगा. एआई को पूछो कि कॉन्फ्रेंस कॉल, पीपीटी और ये सब ढूंढने को, ही विल एबल टू मेक इट फॉर यू. फर्स्ट है उसको बोला 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना. इसमें भी देखो, Sammy Hotels is a leading Indian hotel platform operating in 31 hotels and 4,862 rooms across 13 major cities, managed by top industrial brands like Marriott, Hyatt and IAG under long-term agreement. समझ गया कंपनी क्या करता है? 31 hotels है, 4,800 keys है, 31 मेजर सिटीज में ऑपरेट करता है. द कंपनी एम्स टू कैपिटलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ट्रेड विल्स. ये तो उसने उसका रिसर्च लिखा है, बट यही था कंपनी के बारे में, और कुछ नहीं था. ये तो उसका रिसर्च है. उसके बाद द कंपनी एम्स टू कैपिटलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ट्रेड विल्स हॉस्पिटल सेक्टर एक्सपांडिंग टू 473 रूम्स. मेरा भी तुम देखोगे ना, अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मेरा ये फार्मा कंपनी था तो मैंने यहाँ से चालू किया था. टोरेंट फार्मा is a blaze a neutral pharmaceutical industry successfully implementing concept of niche marketing. They pioneers initiating concept of marketing and rank among the leaders in therapeutic segments like cardiovascular, nervous system, gastro and women healthcare. बस इतना ही था. The company has significant presence in diabetology, pain management, gynecology, oncology and anti-infectives. ये सब उसके segments है. अब ये मैंने उसका ब्रेकअप दिया था, क्विक ब्रेकअप अबाउट कहाँ से रेवेन्यू आता है. समझ रहा क्या करते हैं टोरेंट फार्मा? इंडिया से 44, इंटरनेशनल 51 एंड ये क्रैम सेगमेंट है. इंटरनेशनल में भी मैंने स्प्लिट दिया है. सो ये चीज आई कुड हैव रिटन इट हियर आल्सो, बिकॉज सिंस मुझे ये प्रेजेंट करना था किसी को, जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा था उसको कंपनी ऑलरेडी पता थी, तो इसके लिए मैंने ज्यादा लिखा नहीं था एट द स्टार्ट. बट यू कैन स्टार्ट लाइक दिस. दिस इज द रीसेंट रिपोर्ट. पेज 1, investment thesis with 4 points with a quick company summary. Okay, ये फर्स्ट पेज पे ही होना चाहिए. सेकंड पेज विल बी about the company in detail, which includes segmental और प्रोडक्ट ब्रेकडाउन्स. कोई सेगमेंट है एफएमसीजी में, तुमको सेगमेंट मिलेंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो एफएमसीजी में प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते. ऑटो कंपनी देख रहे हो तो यू विल फाइंड प्रोडक्ट्स. हॉस्पिटलिटी सेक्टर देख रहे हो तो यू विल फाइंड होटल्स, कीज, वो सब तुमको मिलेंगे. तो इन डिटेल एक्सप्लेनेशन. सो this can be depending on, usually it is 5 to 7 pages. So 2 to 8 pages. Second, 2 to 8 pages will be about 8 to 10 actually. 2 to 10 pages will be about the company. It's up to you how much pages you take. It depends on how big the company it is. फिर the 11th page or wherever you end,
industry details, industry research. जैसे जैसे आज हम जो बात करने वाले हैं सैमी ऑर्डर्स, कल मैं बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट थीसिस की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे इम्पैक्ट हो रहा है तुम्हारे होटल पे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री ऑन द मिड सेगमेंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जीडीपी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माई सेगमेंट। ये सब चीजें तुम लिखते हो इंडस्ट्री में, जो जो तुमको लगता है दैट इंडस्ट्री योर कंपनी विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। जैसे होटल, सॉरी, इफ आई टॉक अबाउट ईथर, ईथर में क्या है दैट ईवी पॉलिसीज आर चेंजिंग, लोग, पीपल आर प्रेफरिंग ईवीज। होटल इंडस्ट्री में जाओ तो लोग आर स्पेंडिंग मोर, इन्वेस्टमेंट थीसिस। एंड इफ आई टॉक अबाउट एफएमजीजी, एफएमजीजी में क्या हो रहा है, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स ड्राइव कौन कर रहा है? हाउ इज द इकोनॉमी ड्राइविंग योर प्रोडक्ट और इकोनॉमी ड्राइविंग योर company? Your focus should be on, I would say, focus should be on the forward looking statement, not on the backward looking statement. क्या हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करनी है ज्यादा? हिस्ट्री अच्छी है, फाइन, फ्यूचर में क्या होगा? हिस्ट्री इज गुड। इफ आई से HUL इज वेरी गुड कंपनी, हिस्टोरिकली 10 बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ये हो गया, आगे क्या? हाउ इज द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम एंड हाउ इज द इकोनॉमी सपोर्टिंग इट? जैसे लेट्स से अगर मर्सिडीज इंडिया में लिस्टेड होती, इफ आई टॉक गाइस, मर्सिडीज का सेल्स बढ़ेगा। क्यों? क्यों बढ़ेगा मर्सिडीज का सेल्स बढ़ेगा? इफ आई से दैट मर्सिडीज, तो कैन आई से सिर्फ मॉडल ग्रो हो रहा है इसके लिए बढ़ेगा? दे आर एक्सपेंडिंग, 3-4 अलग प्लांट डाल रहे हैं। क्वेश्चन इज व्हाई आर दे एक्सपेंडिंग? सो इट कैन इजीली मीन दैट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। ऐसे कुछ चीजें हैं जहां से लेट्स से जीएसटी रेट कट हुआ, वहां से चीजें सस्ती हुई, पीपल आर बिकमिंग मिलियनियर्स, जीडीपी, इनकम बढ़ रहा है, एस्पिरेशनल बाइंग लोगों की बढ़ रही है। अच्छा, इसमें और एक रीजन है, मर्सिडीज का एक फाइनेंस, या मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी का एक फाइनेंसिंग आर्म है जो तुमको लीज पे गाड़ी देता है। इफ यू आर बाइंग अ 1 करोड़ कार, आइडियली इफ यू गो एंड परचेज द कार, you get a EMI of 2 lakh, but if you take it on lease, you get it actually at 1 lakh. तो ये भी एक फर्क है जो कंपनी दे रहा है, या इंडस्ट्री इज हेल्पिंग टू ग्रो द कंपनी। सिर्फ परचेसिंग पावर बढ़ना, इट्स नॉट ओनली परचेसिंग पावर बढ़ना, बट देयर आर वेरियस अदर थिंग्स दैट इम्पैक्ट्स द सेक्टर। परचेसिंग पावर, यस, इट इज वन। सो ये होता है तुम्हारे इंडस्ट्री रिसर्च का पार्ट। This can be 11 to maybe 20 pages, usually ऐसा होता है, and from 20 to 30 pages, अभी ये तो बहुत depends company to company, 20 to 30th page in detail of the investment thesis। जो तुमने investment thesis लिखे है ना, with data points, with your data points, कि जो तुमने इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखे है, हाउ इट इज सपोर्टेड बाय द डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स हो गए, चार्ट्स हो गए, या फिर हिस्टोरिकल नंबर्स हो गए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ एयर सॉरी योर एयरपोर्ट्स आर गोना इंक्रीज इन इंडिया। सो अभी कितने थे पहले साल के, लास्ट 5 साल में क्या हुआ है, और अभी कितना ग्रो होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। मैंने एक लिखा इन्वेस्टमेंट थीसिस, आई विल शो यू। मैंने एक सैमी का इन्वेस्टमेंट थीसिस शूटेड, हाँ, ये मैंने ऐसे ही लिखा था, ये ऐसे लिखा, सब कुछ ये ऐसे लिखा। Number of large projects are especially relevant for hotel demand corridors, the Delhi Mumbai Expressway, फिर Delhi JNP distance about 180 will cut times, will cut the time travel time by 50%, फिर 4 धाम मार्ग यात्रा। सो ये सब तुम्हारे कंपनी को कैसे इम्पैक्ट होगा? अहमदाबाद दलोरा कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई, चेन्नई, दिल्ली अमृतसर, ये सब होटल्स तो पहले कितने थे, क्या है टोटल इंडिया में? देखो हाईवेज कितने थे, फर्स्ट स्ट्रक्चरल पीरियड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू ट्रैवल ग्रोथ। द इंडियाज रोड नेटवर्क नाउ एक्सीड 63 lakh kilometers, इंक्लूडिंग 1,46,000 kilometers national highways and 1,79,000 state highways.
ये पहले थे, अभी क्या हो रहा है, अभी कितने बन रहे हैं। तो हिस्ट्री विद द फ्यूचर। और भी था मेरा, हाँ सेकंड, मेरा सेकंड पिलर इज द एविएशन। एविएशन में क्या हो रहा है, फिर मैंने बोला वेडिंग। इंडिया में वेडिंग में कितना स्पेंड करते हैं, पहले कितने करने के, अभी कितने कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या एस्टिमेशन है। सो दोज आर आस्किंग एआई कि एआई कैसे यूज करना है, उसको पूछना तो चाहिए तुमको कि एआई को पूछना क्या है। वो तो डेटा दे देगा इजीली, बट देन यू हैव टू डू मच मच रिसर्च एंड फॉर्म इट इन पर्टिकुलर वे कि चार्ट्स में दिखे या रिटर्न में दिखे वो। फिर ऑफिस डिमांड भी बढ़ रहा है, थर्ड पिलर कि ऑफिस डिमांड देखो। स्पेसिफिक डेटा पॉइंट क्या था, बेंगलुरु में 3 मिलियन स्क्वायर फीट है, हैदराबाद में 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट है, दिल्ली एनसीआर में 1.5 है। जो बढ़ रहा है, हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे, दिल्ली एनसीआर में कॉर्पोरेट्स हो रहे हैं वहां पे, अभी एक नया रिंग रोड भी बना है नोएडा में। सो दिस ऑल थिंग्स विच आर इम्पैक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि तुम बोल रहे हो ये बिजनेस क्यों बढ़े, सर ये इकोनॉमिकल रीजन है। क्या इसमें पता है एसयूवी का इंडिया में डिमांड क्यों बढ़ा, एसयूवी का इंडिया में डिमांड क्यों बढ़ा, एनीवन, एनीवन। SUV या SUV? एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, I think एनीवन। Gen Z wanted more kind of, uh, I mean, the choice of Gen Zs comes to the sports car compared to the economic or the family cars. That was, बाय इट। I mean, ओके। the larger portion of the market is more capable of buying, and the larger portion of the market is Gen Z. I think that's what I've observed around me. They're more नहीं, interested, ऐसा कुछ नहीं कि लार्जर पॉपुलेशन जनरली। and they have more buying capacity. Not Gen Z in general, but people, I think the generation these days is more into sports car, especially the Gen Z. Gen Z, I'm saying because I come from that generation. Okay, so it was not only about the, okay, habits have changed. Now there is a big reason for that habit to change, because as Pratham has rightly mentioned, the road positions in India were not good for traveling. So the traveling industry is booming in India and people would like to have a road travel. So road transport के वजह से, and India में roads are not good for sedans. That is why the people started moving towards SUVs. तो ये उल्टा हो गया कि roads अच्छे नहीं थे, इसके लिए लोगों का प्रेफरेंस एसयूवी की तरफ बढ़ गया, एंड पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग मोर. सो व्हेन यू ट्रैवल मोर, sedans are not for sedans or hatchback are not recommended to travel, क्योंकि वहां पे you get a backache or it is not comfortable driving. So ये पर्सपेक्टिव हो गया कि people started doing road travels, and road travels अगर करना है इंडिया में तो you need to have an SUV, because sedan लेके तुम कोई भी अननोन एरिया में जा नहीं सकते इंडिया में. But there was a recent article which said that the sedan demand will again increase in India just because the road conditions are developing in India. Because sedans are pleasure to drive cars, or maybe even if you sit back, it is a good family car. क्योंकि इतने साल तक sedan ने ही रूल किया था मार्केट पर. Somehow people don't want to buy a sedan because of the low ground clearance. But now these things are again slowly change हो रहा है. If you see, there are a lot of launches in sedans by car makers of Volkswagen, Skoda, Mercedes. Even Mercedes have launched premium sedans. Premium sedan में जा रहे हैं, not in the mass segment sedans. तो ये हो रहा है. Desire was the top selling model. ऐसा है. So this were the things that changed. तो ये होता है इंडस्ट्री डिमांड. ये तुमको फाइंड कर. The 30 and 40 page will be all about charts, financial statements. That's it. तो ये सब, whatever charts you want, I give you 2 reports. ये एक रिपोर्ट है लास्ट में जब आता है. दिस इज आवर शीट. चार्ट्स है, टेबल्स है, पीयर कंपैरिजन है, फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. ये एक लास्ट होता है. मेरा मेरा रिपोर्ट देखोगे तो दिस वाज फार्मास्यूटिकल सेगमेंट. सो इन दिस स्टार्ट्स. एबिटा कितना है, सेल्स कितना ग्रो हो गया, व्हाट इज द आरओई, आरओसी, पैट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उसके कितने हैं, एंड देन
बाद में ये फाइनेंशियल्स. ओके, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू पुट द चार्ट्स. अच्छा, व्हेन यू डू अबाउट कंपनी रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे भी पिक्चर्स आर रिकमेंडेड. Pictures are recommended about the products. Product pictures are recommended. Tables, data tables also recommended. अगर तुम्हारे पास कुछ टेबल में बताना है तो tables are recommended. Industry research में तो everything should be data points with, I would say, bar charts, bar and line charts. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इंडस्ट्री रिसर्च में तो डेटा और डेटा की बात करनी, कितना था कितना होगा एंड वाई. रीजंस तुम हेडिंग में लिखोगे एंड बाकी तुम चार्ट्स में डालोगे. अगेन शो यू ओवर योर इनका इंडस्ट्री. इंडस्ट्री ओवरव्यू लिखा है, चार्ट्स है. वॉट एवर यू राइट, शो इट इन चार्ट. वॉट एवर यू राइट, शो इट इन चार्ट. शो इट इन चार्ट. फॉरेन टूरिस्ट अराइवल ट्रेंड, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रेंड, एयर पैसेंजर ग्रोथ कितना हुआ है सिटी वाइज. तो सी इंडस्ट्री में सब चार्टिंग ही होते हैं एंड यूजुअली बार एंड लाइन चार्ट्स आर प्रेफर. यही चार्ट यूज होते हैं. और ये मैंने बोला टेबल. अगर तुमको स्पेसिफिक कुछ पता, नेट ऑफिस स्पेस ऑब्जर्व करने को, देखो इसने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है, मेरे इसमें मैंने भी लिखा है ग्रोथ. ये ग्रोथ मार्केट्स की बात की, कौन से मार्केट्स में कितना कितना, ये उनको पीपीटी से मिला है, ये पीपीटी में है ये डेटा. कंपनी में अबाउट द कंपनी के प्रोडक्ट्स, इसमें भी चार्ट्स ही यूज होता है. अभी ये दिस इज द रेवेन्यू, एआरआर होगा, एआरआर एंड ऑक्यूपेंसी, कंपनीज के की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स. अभी ऑटो इंडस्ट्री करोगे तो ऑटो के वॉल्यूम्स हो गए. ऑटो में भी तुम बोलोगे टू व्हीलर्स के वॉल्यूम कितने हैं, फिर उसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर्स के कितने हैं, कैसा ब्रेकअप है, समथिंग लाइक दैट. भाई सेगमेंट भी दिया उन्होंने. सेगमेंट इफ यू जूम इट अ बिट, इनके 3 सेगमेंट्स है सैमी के. सेगमेंट एआरआर एंड उनका एवरेज एआरआर, ये ईयर्स में दिए, सी ऑल इन ईयर्स. एंड इनका ये पाइपलाइन टेबल. हाँ, तो अभी ये सब करने को, ये सब कर, अच्छा आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस. इंडस्ट्री में कंपनी के जब एंड करोगे तो उनके कॉम्पिटिटर्स की भी बात करनी है कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है. हाउ योर कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तुम अगर कोई बात कर रहे हो तो उसके कॉम्पिटिशन कौन से. मतलब लेट्स से हम बोलते हैं कि ताज इज इनटू लग्जरी सेगमेंट, तो लास्ट के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है. सो ओवर इज आल्सो पार्ट ऑफ द लग्जरी सेगमेंट. तो उन्होंने दिया है, ठीक, तो रेवेन्यू दिया है उनके, ऑक्यूपेंसी, समथिंग दैट यू कैन क्वांटिफाई कि ये कंपनी दूसरे कंपनी से अलग क्यों है. नंबर्स भी दिए होंगे, पीयर कंपैरेटिव. दे शुड बी ऑल अ फॉर्म ऑफ योर कंपनी प्रोफाइल. की मैनेजमेंट पर्सन लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज. सिर्फ पेज बढ़ाने के लिए लिखते हैं, कुछ काम का नहीं है ये तुम अवॉइड कर सकते हो. मैंने कभी नहीं लिखने का मेरे रिपोर्ट में. ओके, सो दिस इज यूजुअली 30 to 40 पेज का रिपोर्ट बनता है. ये रिपोर्ट था 27 पेज का, मेरा भी 30 पेज का था, तो उतना ही है. 30 to 40 पेज के रिपोर्ट्स बनते हैं मैक्सिमम. तुम्हारे 20 से 30 बनेंगे फिर ऑल्सो इट्स फाइन, बट मेक श्योर वो रिपोर्ट ये तुम्हारे 3 दिन में ही बने. कम हुआ तो भी ठीक है, मुझे रिपोर्ट्स में चार्ट चाहिए. आई डोंट वांट राइटिंग राइटिंग राइटिंग. ये चार्ट्स करो एंड मेक श्योर एआई को ये भी बोलो कि ये रिपोर्ट मुझे 2-3 मिनट में प्रेजेंट करना है, तो इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर. तो पहले रिपोर्ट बनाओ, एआई पे अपलोड करो, क्लाउड पे अपलोड करो एंड टेल हिम कि मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के दो. ठीक. इसके साथ साथ इफ यू आर फ्री ऑन वीकडेज, हम लोग सुबह रोज मॉर्निंग कॉल करते हैं which happens between 10:30 to 1. So you can join the call 10 to 11:30. You can join the call. Usually we talk about the recent developments in the market. If you want to present it, you can also come and present.
बोलूंगा कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, then you have to write it and you have to present it. If you are free, you can come. Interview preparation होने वाला, this I will recommend everyone to join, those who have registered. इसमें we are helping you maintain your CV. CV कैसा रखना है, how to make your CV ATS friendly, कौन से चीजें लिखना है, कौन से चीजें अवॉइड करना है if you are applying for an equity research roles. Okay, this will be from 7 to 8 p.m. from Monday to Friday. So there is a 5-day workshop जो हम कर रहे हैं, and for specifically for RK advice students, but तुम भी आ सकते हो, those who have registered. ये दो चीज you can come and participate. तो यहाँ पे मैम भी है, ग्रुप डिस्कशंस भी लेती है. शी ऑल्सो टेक्स पर्सनल इंटरव्यूज, लाइक वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाउ योर पास्ट एक्सपीरियंस अलाइन विद द प्रेजेंट एक्सपीरियंस. सो वी सिलेक्ट अ वॉलंटियर. अगर तुमको करना है किसी को तो बोल दो कि सर मुझे वॉलंटियर करना है इन द इंटरव्यू, वी विल डू दैट. Okay, now any more doubt before we move on? Research report will prefer more key growth drivers or else any SWOT analysis. No SWOT analysis on Kari. It is investment thesis. No SWOT and all. Oh, that is useless things. I never use that SWOT analysis. मुझे सिर्फ एक कंपनी चूज करो and I will ask you why. You don't have to make it. You just have to understand वो analysis क्या है. मुझे सिर्फ data points चाहिए. I just want data points that if I want to put my 10 crores on your investment idea, is your data point supporting the growth? Well, see, Omkar, if I tell you basically, if I say that you are gonna clear your CFA exams, your CA exams, क्या data चाहिए मुझे? What data I want? If I say that you will clear your CFA exams in next 1 month, what is the data points that I want? How many hours did you study? How many pages did you study? How many mock exams did you give? Correct? Data points? है ना? Then I will make an assumption whether you will pass or not. You can also pass, you can also fail. But let's say if you have done all those things, 90% of the time you will pass. 10% always there is a ifs and but. Anything can happen in the market. I said now, Bharti, which company you have to make a report? That report depends on the companies that you know. Easier company, B2C companies, write it. B2C companies. Specifically, I have told you sectors, automobile, ये किया ना यहाँ पे, automobile, FMCG, FMEG, retail. EG is electronic consumer goods. FMEG, retail, hospitality. सैमी को छोड़ गया बिकॉज सैमी का रिपोर्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वो उस पर नहीं रिसर्च कर. Yes, we'll share all the details in the group, Akshat. Okay. So for the Yeah. B2B companies, as you mentioned yesterday, that you need to have a personal connect. And have Yes. you ever made any B2B equity report? Sorry, ever? Have you ever made any B2B equity research report on a Yeah, B? I have been. I was tracking the entire IT company, IT sector. For that, you It have was, personal connects with people who are yeah. actually providing you the financials data. No, actually, you don't get the financial data. You understand the industry well when you connect. So I was talking with Salil Parekh. Salil Parekh is the CEO of Infosys, personally, one-to-one. Okay. So we understand businesses from, what does, if I ask, what does TCS do? Even the people working in TCS won't understand what are they doing. Okay. And what happens with B2B, I will tell you. B2B companies are not, so IT is not a sector. Infosys caters to banking industry. It caters to pharmaceutical industry as well. So you need to understand what is happening in banking and pharmaceutical industry. IT is never a sector. Or is Zomato bhi IT company hai na? Do you link Zomato with IT?
Does Zomato makes any product? Zomato is linked with FMCG. This is the problem with B2B companies. It requires hell lot of research. And it is always something that is depending on some other sector. Example, steel. If you take steel sector, to understand steel sector, you have to understand automobile, you have to understand infra, you have to understand real estate. If you understand that, then fine, then do. But as a fresher, it becomes very, very difficult to convince someone. Because these are all industries which are depending on some other sector. Yesterday, someone was asking cement. Cement is not a sector कि cement पे grow होने वाला है. Cement will never grow on its own. Something that happens in the economy that will lead to increase in cement. फिर power की बात कर रहे थे. What is there in power? Power में एक गर्मी हो रही है, demand बढ़ रहा है. That's it, हो गया. Capacity expansion हो रही है. There is no research on it then. तुमने क्या research किया अलग से? तो पूरी देखो न्यूज़पेपर में रोज ही आ रहा है. That expand capacity expansion हो रहा है, demand बढ़ रहा है. डिस्कॉम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे और वी आर कंज्यूमिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज हीट इज इंक्रीजिंग इन इंडिया और न्यू मशीनरीज और न्यू फैक्ट्रीज आर बीइंग डेवलप. हो गया. अभी हाउ आर यू डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ टाटा पावर, टोरेंट पावर एंड अदानी पावर? होते हैं, उसकी भी डेटा है. Okay, sir. You don't have the access to that. Thank you, sir. Okay. So auto, FMCG, FMEG, retail, hospitality, these are the sectors that you can track. Which I will say whichever product you use ना, उसी पे research करना. Whichever product you are using or you see around you, better to do the research on that. Okay. Hello. Yeah. Sir, is the industry limited to these industries, or we can pick another sector also? So as long as you can present me the sector, I'm fine. So, like for example, the asset management companies. So, can we do it on them? Again, your asset management companies. Example, which company you're talking about? Is there HDFC any AMC? HDFC, AMC, or ICICI So, AMC? so what research will you do on HDFC AMC? Sir, about the growing inflows and the reasons behind that and the future of. Why? No, I will tell you. I will tell you a reason. Reason behind growing that because of awareness in the society. That is the reason of increasing inflows. How is HDFC AMC making money? Sir, due to the fund inflows, they charge the exit load or the फंड fees. इन्फ्लो नहीं, फंड इन्फ्लो आया तो एचडीएफसी को भी सामने कुछ देना पड़ता ना, रिटर्न देने पड़ते ना. रिटर्न कैसे जनरेट होते हैं? Invest in stocks. हाँ, तो कौन से स्टॉक पर रिसर्च करोगे तुम? एंड यू हैव टू रिसर्च ऑन द एंटायर इंडियन इकोनॉमी कि इंडिया इकोनॉमी क्यों ग्रो होगा. HDFC स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग इनटू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. एग्जांपल फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तुमको फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि अगर HDFC फार्मास्यूटिकल सेक्टर ग्रो ही नहीं हुआ तो HDFC ग्रो ही नहीं होगा. एग्जांपल. तो ये प्रॉब्लम है. ठीक है. इट इज नॉट अबाउट इन्फ्लोज आ रहा है, इन्फ्लोज आ रहे हैं तो हाउ इज कंपनी जनरेटिंग मनी. तो एएमसी तो बहुत डिफिकल्ट हो गया. तो तुमको तो पूरा इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट समझना पड़ेगा उसके लिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, विच इज द टॉप होल्डिंग, वो टॉप होल्डिंग में क्या हो रहा है, रिलायंस ग्रो होगा या नहीं होगा. ऐसा है. इसके लिए ऐसे अवॉइड अवॉइड ऑल दो सेक्टर्स जहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं है. एंड वन मोर थिंग, उसके बाद इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग इन HDFC सिक्योरिटीज एंड निप्पॉन और मे बी मोतीलाल ओसवाल, क्या फर्क है दोनों में? इट इज इन डिफरेंट. तुम किसी में भी डालो, प्रोडक्ट तो दोनों के सेम है ना. हाँ सर. ऐसा है. ये प्रॉब्लम है. इसके भी रिसर्च होते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होते हैं, होते हैं इसके रिसर्च. बट तुम उसको करने तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको. एंड वो तुमको ऐसा फ्रेशर लेवल पे नहीं करना चाहिए कि इंटरव्यू में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बात करना. ऐसा है. Okay, I'm reading on healthcare sector for the last 3 months in hospital industry. So my question is, क्या मुझे ये सेक्टर चेंज करना चाहिए? आई विल से ओमकारी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो लेना भी मत, इतना डिफिकल्ट सेक्टर है. आई हैव बीन एन फार्मा एनालिस्ट फॉर लास्ट 8 years. मुझे भी नहीं समझा अभी तक फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतने अच्छे से. सो थोड़ी जाओ, फार्मा तो वेरी डिफिकल्ट. आई विल आस्क यू जस्ट 2 things. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैरासिटामोल, क्रोसिन जो
GSK बनाता है क्रोसिंग जो सन फार्मा बनाती है, फर्क बताओ दोनों में। ऐसा है difference. Always have a differentiating products. If you don't have a differentiating products, this is not the right time to track the companies. Okay. Any more doubts? If we proceed? Yeah, hello, Any sir. more? Yeah. Yeah, sir, I have a doubt. I understood the process, like the way, like how to create the equity research report, but the part I'm missing is who are my end users, sir, about for this equity research report? Like some investment professionals will use this report, so I need to write the report based on how to use the investment professional use, or a consumer like retail investors. So, in which perspective I need to write the report, sir? Like I didn't get that part. Let's say I have 100 crores with me. I have to invest. Which company should I invest? Okay. That is the purpose of writing. So your report should be related to everything, that is, why will the stock grow, increase? Stock increase as in the profitability of the company will increase. So you have to write, you have to explain me. If you're an advisor, it is based, you are an advisor, I'm an investor. So basically, I need to write a report in a layman term, like anyone need to understand the report. That's it. Huh? Anyone who wants to invest the money, where should he invest the money? That is the major purpose of writing a report. Yeah, okay. Thank you, sir. Okay. Because when you send me the report, let's say I will not tell you to explain. I will first read. Example. So what should I read? That you have to write. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. So guys, this was a briefing. So I will, those who have not been added in the group or those who still register, you can just connect me on this number, 77388865262. You can connect on this number on WhatsApp. Those who are already in the group, I will share you all the details. Morning call, interview preparation. We are starting from tomorrow. It will be from Monday to Friday. इंटरव्यू प्रिपरेशन रिकमेंडेड टू अटेंड, क्योंकि तुम्हारा सीवी उस पर डिपेंड होगा। मॉर्निंग कॉल अगर तुम फ्री हो तो आके सिर्फ सुन लो, चाहिए था तुमको, चाहिए था कुछ प्रेजेंट भी कर लो, टोटली फाइन, वी आर ओपन। तुमको आगे तुम्हारा इंग्लिश इंप्रूव करना, यू हैव टू सी हाउ पीपल आर टॉकिंग, हाउ माय स्टूडेंट्स आर इंटरैक्टिंग, रोज किस पे बात कर रहे हैं। आई आल्सो स्कूल देम एट टाइम्स कि तुम कुछ भी सुबह कुछ भी पढ़ के लेके आते हो। ओके, सो यू कैन अटेंड दो सेशंस। The morning यूट्यूब call will include only about every day that you have mentioned. So Monday you're going to explain or about financial model, or are we supposed to do it? No, Sorry, I no, missed you don't have the to. till part. This is, I give you a framework till next 10 days. Okay. If you have any doubts, you can come. Okay, any doubts in this, So we you can can, ask doubts in the yeah, morning session. in the morning. Yeah, you can ask that in the morning call, time between 10 and 11:30. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay. That's why I've kept it open. If you have any doubts, you can come, and whatever doubts you have around, if you have done anything and even tell you, sir, I want to present those things, you can always do that. Okay. अरे सर Yeah. Yeah. मैं वो इंटरव्यू प्रिपरेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा शिफ्ट ही यूएस का है, तो वो Oh, 7 से 8 PM तक मैं नहीं वो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। okay. So, सर अब तो मैं तुमको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उसके। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो ठीक है। मच। मुझे सिर्फ बोल देना एक बार। ओके। Hello. Yeah. Yes. Yes. Hello. Yes, Jagdish. Sir, myself Jagdish. Yeah, Jagdish. Yeah. Let me introduce. No, I have post graduation in commerce, and I Okay. am looking for. I am working as a deputy manager in the reputed RTA industry. So, how this course will be useful for me to upskilling in this investment journey and advisory part and all. So, what could you please help me out on this advice for that? So what are you doing currently, Jagdish? No, I am working as a deputy manager in our RTA industry for the reconciliation department. Okay, recon. So now why don't you shift, Jagdish?
No, I want to learn from the investment side part as well. So no, basically, I am core into the finance side. So I have learned first 8 years I worked with the account side. So after 10 years, I am working as a uh, in the investment part. So in this also, the personal finance also I have to go, learn in seams, and that's what I am planning to switch over the investment side for the, I mean, the fund account. I am planning to crack the job in the fund house. So is So, it possible see, to no, I will not for recommend me to to? change your career at this time. It is because this role, investment role, is little bit on the, I will say, equity side. What I teach, there are other roles which are into credit, which are into financial statement analysis or FP&A roles. There you can join, but whatever I do is specifically equity research. Those who are interested into equity research, I help them. Or maybe investment banking, where you invest in private equity, or maybe in a debt fund or something like that, where research is important. Okay, okay. So not recommended. See, at this age, to not change unnecessary careers. No, I am not planning to do the change and all, sir, but I would like to learn, and I would be a part of the investment uh, banking Okay. sector side in the fund accountant team. So Okay. if that's what, is it possible? I can learn it. It's my side. That's what I want to know, sir. Yes. So we do it. So we have a training program for which lasts for 3 months, where Okay, we continuously talk only about investments, presentations, whatever you like. I also give my thoughts, which company to buy. I'm making a report on. I have my own fund. I tell which fund I invest, whether it's okay, aligning with your interest, or you are saying no, sir, you are wrong, something like that. So we discuss it on a daily basis. So with this, usually students get help them to get placed into equity research roles, or maybe private equity roles, because every time we just talk about investments. And for that, this all things we are doing, writing report, making a financial model. But if you want to learn, yes, appreciate it. You can come and you can learn with us. Every day we have okay, morning calls. Every day I also now create videos to tell to make investors updated what is happening in the market. We read newspapers. There are students which come every morning and they present their work. okay, okay. Okay, thank Okay. you, sir. What would be the suggestion for me to the course, which course I have to take, and from your end? It seems it's quite enough to learn something as well, learning part for that Learning part. is. Yeah, there is a mentorship program which is at 25,000 that we are doing it. It's a 3 months thing. All recordings, Okay, it's all recorded. Sorry, means it is live, but all things are all recorded. So if okay, you miss any sessions, you can attend those sessions again. You can listen to the sessions. So we make models, we make research reports, we read conference calls, we track sectors, we have the data points, and at the end, where should you invest your money? okay, 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 okay. Thank you, sir. welcome. Which active funds is currently there? Which active fund? As it Neeraj, I didn't get you. Which active fund? Oh, sorry, you wanted to ask. You. Uh, yeah, sir. So I wanted to ask that you showed us two reports in this session. So do we have to follow the same format? Like on the left side, we have Yes. to mention the estimates and everything, and then on the right side, we have to write the investment thesis. Yes, same. How it has been for. So it is just the first page of investment thesis. Rest all, this is the first page which is different. Rest all is same. Rest all is to start from over here. See, it's just they have left one column. That's it. Okay, so is it compulsory to do that on the first page? Like make Yes, it separate? yes, because this is how the industry works. Okay, Because when you show me a company, when you show me a report, see what I will see. Let's say I am not, no, I don't know now which company I'm talking about. Let's say you come up with any random company. Now, my first question is what is the market cap? Which sector it is? What is the 52-week high low? What is it currently trading at? Okay. What is the performance in relation to Nifty? What is the shareholding pattern? Okay. okay, Usually you can use this one. This is much simpler one. So you can use this format in the start.
some a simpler one. Easily I understand. And then I quickly see what are the 4 points that you're talking about. Okay. This format you can check. Okay. So, will you be sending us the reports for reference? Yes, I will send you this report on the group. Okay. Thank you, sir. Okay. Yeah, ma'am. Hi, sure. So actually, just want a bit one career guidance in this. Ma'am, cannot Actually, hear you. Ma'am, cannot hear you. Sorry. sorry. Is it better now? Please go ahead. Oh, just a minute. Is it better now? Little bit low, but yeah, I can hear you. Okay. I'm trying to speak a bit loud so that it would be a bit clear to you. So actually, I want a career guidance from you. Actually, right now I am working as an assistant manager with one of the big four audit firm as a valuation professional. So and so actually, I'm working for US geography, and that's a back end role. So I have deep interest in equity research role and want to switch my career into that. But the challenges that I'm facing yesterday also, actually, I just asked a few points to you that I will not be able to come to your office for that if get selected for that internship. Then you son told me that it will be work from home. Then you just be doing given whatever you will be give to me, I will be Hmm. doing that. So, but still, I feel that that way, or even if I will do that, that will not be effective way to learn the thing. So, only the thing that I am getting stuck that I am not able to do the internship because of my day-to-day office. Right. So, is there any way that by which I can transit my career from current role to equity research? So, just want a Uh, guidance from you. ma'am, how old are you? 32. 32. Yeah. So, ma'am, the question comes that why you want to shift at this age? Okay. So, actually, since last 1 or 2, I can say last 1 or 1.5 years, I have gained an interest in the directly working for the investment profile. So mainly my interest into managing funds or managing the portfolios. So I just when I tried to get the path of that, then I found that it started from equity research, primarily from the buy side, and when you move up a side on the ladder, then you will go. It is possible that you should become a fund manager. So that is the thing. And when I started my career, I do not have exact what are the rules in the finance, pure finance, and how it used to move. And I don't have any MBA degree or other. So that's why I main reason for changing want to change my career is that I just gain understanding about this one, and now gain the interest that, and anyhow I just want to switch my career. That is the basic reason for that. Ma'am, what is your qualification? Education qualification. Qualification on ACCA, so CA that is from UK, and CFA L1 qualified and pursuing L2 right now. Okay. See, Mayank, now there are two options in this. I had one guy, same like you at your age. He already had a daughter of 1 year. So, what happened? He was a CA, chartered accountant, working in Goldman Sachs, earning in excess of 20-25 lakhs. Okay. Mhm. Now the question is, he was the same like you, sir. I want to get into research, etc., etc. I don't have time since working in Goldman Sachs working at like 10, 15, 10, 10, 12 hours a day. Yeah, After that, you will not get any time to work. Okay, to prove yourself that you are interested into equity research. yeah, Now I told him that see, you can come to my course, you can do things. I will tell you to work on specific things. If you can take out time, let's say if you're working 12 hours and the next 6 hours you give and you sleep only for 6 hours, ऐसा तुम करो तो कर सकते हो. That is one way to do. इस पे कोई guarantee नहीं है that you will get a job. But there was one guy who was uh, one of my student. He got a role, same valuation analyst, working in some random companies, but he was more inclined towards research. But at the start of his career, he was just 1 year, 2 years into that role. He clicked it and he got a role with a CTC of 17 lakhs, an MBA fresher with a CTC of 17 lakhs. वो उसको मिल गया because he was little bit different. He used to get up at 4 a.m. in the morning, do all the things that I have told him, and he was actually interested in equity research. तो सब कुछ करने का, and then I just used to help him align the things in a proper way. इधर उधर बात करने से था, पॉइंट पे आके बात करो. अभी ये तो दोनों सिनेरियोस अलग है. जो सीए था ना, was 31 years.
उसने जॉब छोड़ा था ये सब करने के लिए. It is like saying, man, you are, let's say, playing football the 10 hours a day just because IPL में पैसा है. तुमको अभी लगता है कि मुझे IPL खेलना है. तुम रोज IPL देखते भी हो, तुम एनालिसिस भी करते हो, तुम थोड़ा जाके नीचे वीकेंड्स को क्रिकेट भी खेलते हो. Will that help you crack IPL? No. जबकि you are not playing it. You are not even exercising it. Forget about playing it. तो ये है. तो अगर तुमको करना है तो there is a risk. You leave everything, take a step back, take a step back and see whether you can, गो बैक. तो जो स्टेप बैक लेता है उसका तो हो ही जाएगा. वरना मतलब मैं जब व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस इक्विटी रिसर्च रोल्स, दे रिक्वायर एक्सपीरियंस. किसी ने मुझे बोला एमबीए फाइनेंस करना चाहिए, मैंने एमबीए फाइनेंस किया. किसी ने बोला सीएफए करना चाहिए, आई स्टार्टेड डूइंग सीएफए. फिर भी मुझे जॉब तो मिल ही नहीं रहा था. जब भी मैं चाहता होता था कि हमको एक्सपीरियंस चाहिए, तो लाइक दैट. सो फॉर दैट एक्सपीरियंस नो वन वाज रेडी टू टेक मी. कोई इंटर्नशिप को Yeah, लेने that, के लिए रेडी नहीं था. तो that, लाइक दैट, नहीं हम तुमको इंटर्नशिप भी नहीं लेंगे, हमको काम करना चाहिए. बिकॉज इंटर्नशिप ऑल्सो यू नीड टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक थिंग्स. बस टुडे आई हैव हायर्ड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम जेबी जमनालाल बजाज. उनको नहीं आता है. मतलब जस्ट बिकॉज दे आर 2 मंथ्स है तो मैं को ठीक है, आई हैव टेकन इट, मुझे पता है कि उनको नहीं आता है. बट इफ आई एक्सपेक्ट कि तुमको कुछ काम करे मेरे लिए, तो आई विल नेवर टेक देम इन माय स्मॉल कंपनी एज वेल. रिया जेबीएमएस आर वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र टुडे. बट स्टिल आई विल नॉट टेक देम. वो टॉप होंगे उनकी फील्ड में, मेरे फील्ड में नहीं. लाइक दैट. यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक. नहीं तो, एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू एट दिस एज. 23-25 है तो मैं बोलता कि ले लो एक स्टेप बैक, चल जाता है. 32 में यू माइट बी हैविंग सम कमिटमेंट्स. तुम्हारा अभी मनी इज इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तुम जब वापस जाओगे तो शायद से तुम्हारी सैलरी अभी जो मिल रही है उतनी आधी भी नहीं मिलेगी. तो ये सब वर्थ है क्या करना. और एल्स अगर ये वर्थ नहीं है तो आई एम डूइंग इट, फ्रीलांसिंग काम करते रहो. सम पॉइंट इन टाइम वो कहीं ना कहीं तो हेल्प हो ही जाएगा आगे जाके. इफ यू कम टू मी, जैसे मेरे कोर्स में, इफ यू ज्वाइन इट, मैं देता हूँ काम, तुम कर सकते हो क्या इतना काम, तो करो. एंड देन प्रूव इट द सेम थिंग इन योर ऑफिस और इन द इंटरव्यूज. तो शायद से दे माइट कंसिडर यू. ऐसा है. so आपके काम में तो कैसे होता है? Means joining your course you are saying. हाँ, तो वो एक पार्ट है ना कि तुम आके कुछ काम कर लो मेरे साथ रोज बैठे बैठे. क्योंकि आज भी मैं तुमको काम दे दूँ, तुमको थोड़ी आने वाला है काम करने. ऐसा है. एंड वो काम तो अर्जेंटली होता है. मतलब जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल तुमको रीड करना ही है. अगर तुम नहीं करते, तुमको 4 दिन बाद मुझे रिसर्च रिपोर्ट देते, तो वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं है. Got it. तो वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हाउ फास्ट यू शुड बी, तो ये तुम एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करके बता सकते हो. क्योंकि वो काम ही होता है. इनफैक्ट ट्रेनिंग तो सिर्फ एक बाहर, मतलब एक पार्ट है उसका. मेजरली तो तुमको काम ही करना है. अच्छा. Got it. ओके. ठीक है. Anyways, thank you for the guidance. वेलकम वेलकम. ओके. ओके, सो नाउ लेट मी मूव टूवर्ड्स वो कल हमने जो 1 पेजर रह गया था हमारा. जब वो 1 पेजर के लिए पहले तो मैंने ये हाइलाइट्स करके लिख दिया है. एंड मैंने एक, आज हमने ये एक पेज भी बनाया. तो सेम सैमी का ही था. तो फर्स्ट डिटेल्स ऐसे ही होते तुम्हारे. दिस इज द वे यू मेक. मैं ये कॉपी करता हूँ एंड मेरे इसमें डालता हूँ. I will have my report. ये इन्वेस्टमेंट थीसिस था. This copy pasting thing. ये मैंने आज बनाया. कल कल सॉरी, इन द क्लासेस ओनली वी मेड. Insert text box. You draw a text box. And you, okay. ये हो गया मेरा फर्स्ट पेज. अभी ये सब डिटेल जो तुम यहाँ पे देख रहे हो वो मैंने सब एक्सेल पे डाले. आई हैव दिस एक्सेल फाइल ओवर हियर. मैंने ये इंडेक्स बनाया है.
यहाँ पे मैंने सब लिखा है एंड फिर वो कॉपी पेस्ट करके मैंने मेरे वर्ड फाइल में डाला है। यहाँ से मैं देखो इट इज ऑल इन बॉक्सेस, तो ये मैं कॉपी कर सकता हूँ। आई कैन कॉपी दिस एंड आई कैन इजीली पेस्ट इट ओवर हियर। Copy this. कॉपी ये इधर आ गया and I can put it wherever I want. अच्छा, उसके पहले ये जो ड्रॉ ना, मेक श्योर यू हैव अ इंसर्ट मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स। हमेशा ड्रॉ और टेक्स्ट बॉक्स करना, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू मूव। तो ये तुम्हारे रिपोर्ट राइटिंग में भी काम में आएगा जो तुम बनाने वाले हो इन द नेक्स्ट 10 days। ऑलवेज क्रिएट टेक्स्ट बॉक्सेस एंड राइट ऑलवेज। आई कैन कॉपी एंड आई कैन पेस्ट इट ओवर। ये तो आ गया। ये कर्सर यहाँ पे, अगेन सेकंड द सेकंड कर्सर यहाँ पे, कैन कॉपी दिस अगेन, कॉपी and paste. Okay, so I can move it. See, wherever I want, I can move it easily. ये पिक्चर पर भी कॉपी हो गया। थर्ड इज योर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। तो ये दो है इसमें। So it is, and the last one is your chart. And यहाँ पे it's your name and all the things are written over here. Yeah. जैसे मैंने मेरे इसमें क्या, this is how you write your name, address and वो सब यहाँ पे एक जगह तुम छोड़ते हो। ना भी ये कॉपी पेस्ट जो हुआ है, इट इज बिकॉज वो पिक्चर फॉर्म में हुआ है। तुम सीधा सीधा एक्सेल में, शायद मैं एक करके दिखाता हूँ, show you how I do it once. I create an insert box, text box, I draw a text box। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ एंड जो मैंने यहाँ पे एक्सेल पे किया है मेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉपी एंड आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। एंड once I paste it, so now I can manage it. It takes a bit time. This is how it, so I can now move it anywhere I want. See, I can frame it. सेम मैं इसी का भी इसका भी मैं कर सकता हूँ। आई कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स। तो ये सब टेक्स्ट बॉक्स बना के ही होता है एंड इट इज अ टास्क नाउ। ये बहुत बड़ा टास्क है टू डू क्विकली, बिकॉज आजकल इंडस्ट्री में यही चलता है, या यूजिंग इट। एंड वर्ड में इट इज स्पेसिफिकली बेटर टू डू इट इन अ वर्ड फाइल देन ऑन पीपीटी। पीपीटी में बहुत प्रॉब्लम होता है ये करने में। I can now move it easily I want. This is how it, and then I can then put it over here. ये मेरा जो बॉक्स है, I can सेम वे अगेन तीसरा। अभी ये सब मैंने डाला वैसे ही मैंने डाला है ना। अभी तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सिर्फ नॉर्मल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट एज, लेट मी सी। अच्छा, ये पिक्चर में ही आ रहा है, इट विल नॉट कम एंड सो।
will not come. Now, don't copy paste things, so add करके ही करना. Insert text box and draw your whatever you want. Just draw. हाँ, ये मैंने कहाँ पे किया है, मेरे एक्सेल फाइल पे जो मॉडल्स है मेरे पास. See, I have created a summary sheet over here. Here, this was a part of my copy, paste it. So paste it. I have tons of. So, sorry to interrupt. Yeah. Are we also supposed to make the financial model, or are we just supposed to make the report, the equity research report? Sorry. Report without models have no meaning. The first day I told, no, it is financial model you make on the first day. We discussed, no? Yeah, we did discuss the financial model. Last 10 years का data लेना है, 10 at least 5 years का forecast करना है. Forecast of 5 years, sorry. I think I forecast for 5 years, yeah. Because see, when you are giving me an investment thesis, मैं तो ये पूछूंगा ना कि ये तुम्हारा सेल्स 11,000 का 12,000 कैसे होने वाला है? What are you aiming on that? Okay. The entire investment is based on your model. Okay, then I will check your model, whether this data are there in your model or not. So, I've prepared one model. It has taken me for a month to prepare it. I mean, I am a beginner, I accept it, but इस 10 days के challenge में model नहीं तो मेरा एक वीडियो है, I will show you my video classes. Model बनाने take half an hour. So, after it should not take more than half an hour. चलो 1 घंटा तुम्हारे लिए सही. More than 1 hour. अच्छा डेटा वेटा पंच करके चलो 3-4 घंटे. If you start from all putting data and all. That's it. It's a bit scary for me, I mean, as at this stage, but I'm trying. Let's see what happens. You will be providing the videos, right? हाँ, I will be providing that. तो बेसिक मॉडल तो see इसमें क्या है, बेसिक ही है. अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं इसमें डिफिकल्ट. It's just about sales grow होना चाहिए, EBITDA margins क्या होगा, etc. etc. Okay. Okay, got it. Okay, basic model DCF बना के तो ready. See whether वरना तुम how will you prove it that you like a company or not? Okay. को तो पता होना चाहिए क्या PE पे ट्रेड हो रहा है, क्या EV by EBITDA पे ट्रेड हो रहा है. At least you should know that kind of things. Okay. Okay, sir. Thank you. वरना एक्सेल नहीं करोगे तो फिर ये सब डेटा डालोगे कैसे तुम? How will you put all those things? I have also created this chart. These are the things we actually teach in the sessions. So यहाँ पे वापस I can insert text box. Yeah, Sammy is not allowed to take. यहाँ पे I'll just show you ये सब निकलने के बाद कैसे दिखता है. So everything should have a heading. ये क्या numbers है? So if it's not fitting, you can reduce the numbers a bit. Font size usually 9 is preferred, not 8. 9 is preferred. अगर नहीं हो रहा है तो you can try to split, थोड़ा सा और कम कर सकते हो तुम ये, और थोड़ा सा मार्जिन तुम ज्यादा बढ़ा सकते हो if you want. थोड़ा सा नॉट, ऐसा नहीं पूरा हाफ पेज नहीं आना चाहिए. ये इतने पेज में आराम से फिट हो जाता है. It gets fit. We are doing it from so many years. तो ये इसमें हो जाता है. तुमको सिर्फ थोड़ा ध्यान से करना चाहिए. ये हो जाता है यहाँ पे. At majority of the things, majority of time it happens. Because my judgment will also be on the formatting. कि तुम फॉर्मेट कितने अच्छे से कर पा रहे हो.
because at the end मुझे ये client को भेजना है, and to send it to the client I just cannot send unformatted things. It should look good. Even if you cannot present it, it should ideally look good. Presentation तो तब होगा जब your report will get selected. तब सामने वाला तुमको कॉल करके बुलाएगा कि हाँ ये रिपोर्ट मुझे प्रेजेंट करना है, तुम आओ. तुम्हारा प्रेजेंट रिपोर्ट ही खराब होगा तो कुछ भी तुमको प्रेजेंट करने बुलाएगा नहीं. So see, this happens with financial models only. तो ऐसा ही होता है. And then I will remove all the outlines. See, I remove quickly outline. No outline. Okay. Says all the outlines I will remove. This is, yeah, सबसे end में करना. Outline, no outline. Again, outline, remove your outline. This should be done at the end जब तुम्हारा सब बना के हो गया and अभी तुमको ये मुझे send कर रहे हो and you are just doing the last bit of formatting. This is how it looks. अभी भी थोड़े है. Should all be in one line. So सेल साइड पे ना ये सब करना होता है and उसको बहुत टाइम लगता है. That is why freshers are not entertained. अगर उन्होंने कभी कुछ बनाया नहीं होगा ना तो वो यूजुअली एंटरटेन नहीं करते. एक्सेल पे अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो, वर्ड पे अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो, पीपीटी तुमको आता नहीं है क्विकली करना, तो दे आर नॉट. मुझे भी कितने लोग पूछते हैं कि इसका रिसर्च एक रिपोर्ट बताना, हाउ डज ही राइट, आई हैव टू सी हाउ डज ही राइट, ये कोई चीज प्रेजेंट कैसे कर रहा है. ऐसे भी मुझे मेरे रिक्रूटर्स पूछते हैं. यू डोंट बिलीव, एक एमबीए स्टूडेंट था and I sent his report to one of my manager, and my manager was like, Rishabh, did you help him to make the report? ये तूने बनाया या उसने बनाया? But it was that same like how I have made the report. जब मैं वो कंपनी में काम कर रहा था, मेरे जो रिपोर्ट्स थे उसने वैसे का वैसे बनाया था. दो थोड़े बहुत इधर उधर थे, बट ही told me, ऋषभ ये उसने बनाया तुमने बनाया? I said उसने बनाया. Okay, call him for interview tomorrow. It was that quick. Just on the basis of report, he was called for the interview. Now I'll start writing my investment thesis, जो मैंने already लिखा है मेरे पास. I put it somewhere. Okay, 1 second, just show you. Okay, my first investment thesis was about the consumption tailwinds from wedding mice incomes. Okay, I'll show you. मैंने लिखा था एक जगह पे on the screen. यहाँ पे it was my first investment thesis, that consumption tailwinds from wedding and mice and rising income. So consumption tailwinds means ये industry में there is a consumption tailwind that is helping provide a strong branded hotel. So ये मैंने यहाँ पर data दिया था that why I'm liking this particular stock. So font should be Calibri, not even light the Calibri. ये industry में use होता है. Font should be 10. Writing, it is a writing font. Sorry, 11, and heading should be 10. That's it. उसके ऊपर भी font use नहीं होता. This was my first investment thesis. Second was
We have written it, and then I have, I don't know where did I put it. I'm getting it. Robust growth in pipeline with high quality addition. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, there is a tailwind in the wedding mice and rising in, and the income is rising. उसके बाद there is a robust growth in pipeline. मतलब ये जो incomes हो रहा है उससे it is leading to increase in my recent addition includes holiday in Kolkata and 56 rooms in Whitefield, Bangalore, along with an expansion in Sheraton Hotel, Hyatt Pune. Upcoming projects include Courtyard, Pune conversion, a tribute to portfolio at Jaipur, Fairfield. ये सब मैंने इसके नाम्स दिए हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है. ये मैंने खुद ढूंढा, ये सब रिसर्च मैंने खुद किया है. लुकिंग एट द कॉन्फ्रेंस कॉल, एनुअल रिपोर्ट, पीपीटी, एंड फिर मैंने एक एनालिसिस बनाया कि ये सब में ग्रोथ क्यों होगा, बिकॉज देयर इज अ टेल विंड इन द वेडिंग माइस एंड इनकम्स आर राइजिंग फॉर द पीपल. सो फिर इसको सपोर्ट करने को देयर इज समथिंग अगेन हैपनिंग इन द ऑफिस स्पेस. तो वो मैंने बोला था ऑफिस स्पेस, शो यू fine. I wrote it. Be stop. Sorry. Got it. Strong corporate demand. ये सब मैं कल बैठ के यही कर रहा था. But if I want to make an investment thesis, तो क्या? इससे ज्यादा I had one more good point. ये चैट जीपीटी ने मुझे दिया है, जो भी दिया है ना मुझे, चैट जीपीटी ने ही दिया है, एआई ने ही दिया है, बट मैंने वो स्ट्रक्चर्ड किया है. So I had one more part of it. Structural demand shift in मैंने यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के बारे में सब कुछ लिख दिया. स्ट्रक्चरल टेलविंड्स फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन एंड कंजम्पशन ग्रोथ. मतलब पूरे इंडस्ट्री में, पूरे इकोनॉमी में देयर इज a tailwind in infrastructure, there is a tailwind in aviation, and there is a tailwind in the consumption growth story. इससे क्या हो रहा है? कंजम्पशन, इंडिया इज अराउंड, वेडिंग सीजन इज अराउंड इज $103 billion मार्केट विच इज ग्रोइंग एट 14%. इंडियन इकोसिस्टम, नेशनल हाईवेज इतने बन रहे हैं, मैंने तुमको अभी बताया था. साइमल्टेनियसली एयरपोर्ट्स भी ग्रो हो रहा है. तो ये सब से क्या होगा? इसके बाद इनका एक रॉबस्ट पाइपलाइन भी है जो ये सब सिटीज में करते हैं, एंड सिंस इसके पाइपलाइन है तो कॉर्पोरेट डिमांड भी यहाँ पे स्ट्रांग है. That is why I feel that this company will grow. And और एक था मेरे पास, और एक इन्वेस्टमेंट thesis था which says that overall इनके जो पाइपलाइन है that will lead to increase in ARR and your margins. This was the fourth point. Well segmented portfolio supporting ARR and occupancy. तो इनके जो 3 segments है, upper mid scale and upper upscale, वो सब कंपनीज में क्या हो रहा है? एक्सपेक्टेड टू ऐड 135 रूम्स, अपर मिड स्केल सेगमेंट, ये सब उनका पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट थीसिस. सो बस ये मेरे 4 पॉइंट्स थे विच आई अगेन आई विल टेल यू कैसा किया. पहले आई स्टार्ट विद इंडस्ट्री, फिर मैंने बोला उनके पाइपलाइन में क्या है, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफिस में क्या डिमांड हो रहा है, एंड ये सबको कैटर करने को दे हैव अ वेल आर्गुमेंटेड पोर्टफोलियो. जब तुम बोलते ना एक्सपांशन कर रहे हैं, तो ये सब इंडिया में हो रहा है, तो उसको एक्सपांशन करने के डज इट हैव द कैपेसिटी? तो यस, इट हैज द कैपेसिटी. और एक इनका था, फिफ्थ पॉइंट भी एक था, जो लोग दे आर मूविंग फ्रॉम अपर मिड स्केल टू अपर स्केल सेगमेंट.
which is contributing currently 42%, is expected to contribute for 60% from that segment, and which will lead to increase in EBITDA margins. So एक ही point था that I can write it. कहाँ पे तो मैं इसको क्लब कर सकता हूँ. I have that point with me. I'll show you that point also. Upper upscale portfolio to shift to improve ARR and margin. तो ये इसको मैं इसमें क्लब कर सकता हूँ. I can tell AI ये दोनों को मुझे एक सेगमेंट में करके दो and it will do it. बताओ करके तुमको. चलो this one. To just show you how do I make AI को करके कुछ AI के बोलता हूँ. ये सब डेटा मैंने फाइंड किया है. I tell AI मुझे ना ये सब एक क्लब करके दे दो. And not to miss any data points. Okay. Tell ChatGPT. You can use तुम पूरा ChatGPT से बना सकते हो. बस तुम इतना भी तुम बनाओ. I will judge you based on your presentation. Make it one paragraph. With the proper heading. And margin expansion. Yes. The company is well diversified portfolio. Short. Keep it short. The company is diversified portfolio across upscale to mid-scale, supports strong ARR and occupancy growth. The upscale and the upper scale segment, 5 hotels, 118 rooms contribute 42%, 71%, and it's set to expand 131 to 35 rooms, increasing its mix to 60% and boosting margins. The upper mid-scale segment, which is having 14 hotels and 2,047 rooms, delivers a 41% revenue, while the mid-scale is contributing, supported by balance and yet increasing premium portfolio. इसमें क्यों होने वाला है? Because they also have an good portfolio. से थोड़ा और, if I read it, I have to refine it bit तो ताकि मैं ये present कर सकूं. This is always अच्छा. तो when you write your investment, sorry, your initiating report, तो ये चीजें तुमको और डीप में बतानी है कि ये सब चीजें तुम्हारे कंपनीज को कैसे इंपैक्ट होगी. या ठीक है चलेगा. स्ट्रक्चरल टेलविंड्स हो रहा है इंडस्ट्री में, इनका पाइपलाइन है, पाइपलाइन ग्रो हो रहा है, डिमांड आ रहा है, काफी ऑफिस ऑब्जर्वेशन की डिमांड आ रहा है. ये वो सैमी के रिपोर्ट में भी था. एंड इनका ये सबको सपोर्ट करने के लिए दे हैव अ वेल आर्गुमेंटेड पोर्टफोलियो. जो इतने रूम्स थे अभी वो इतने रूम्स में कर रहे. तो इसमें यू कैन टॉक अबाउट रूम्स, कितने रूम्स थे, कितने रूम्स ऐड होने वाले हैं, एंड समथिंग लाइक दैट. सो इट विल बी टोटली योर रिपोर्ट, योर इन्वेस्टमेंट थीसिस. अज्यूम करना कि तुम्हारा 10 दिन बाद इंटरव्यू है, तुमको एक रिसर्च करने बोला है कंपनी पे. मेक अ प्रॉपर थरो रिसर्च. एंड तुमको पहले तुम्हारा रिपोर्ट सबमिट करना है. रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही यू विल बी अलाउड टू टेक एंड टू गिव एन इंटरव्यू. वरना बिना रिपोर्ट के तो इंटरव्यू कोई काम का नहीं है. एंड ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आई एम अ ट्यूटर, आई एम एन एनालिस्ट ऑल्सो. मुझे पता है कि मुझे ये फॉर्मेट में ही चाहिए अलग. क्योंकि अगर तुम ये फॉर्मेट में देते हो तो मुझे तुमको सिखाने का काम कम हो गया ना. जैसे इफ आई हायर यू, एग्जाम्पल मैं सेल साइड एनालिस्ट हूँ, हायर यू, मुझे तुमको सिखाने का काम कम हो गया. इसके लिए मैं बोलता हूँ फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड योर थॉट प्रोसेस कि तुमने वो कंपनी सिलेक्ट क्यों की. यहाँ पे यू जस्ट टॉक अबाउट वैल्यूएशन. तो वैल्यूएशन तो यू विल अंडरस्टैंड ओनली इफ यू नो द कंपनी. लाइक वैल्यूएशन वी राइट छोटा वैल्यूएशन है, कंपनी क्या रेट पे ट्रेड हो रही है, व्हाट यू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, व्हाट इज द कंक्लूजन एक्सेट्रा. कंक्लूजन भी है मेरे पास. क्या कंक्लूजन, अगर मुझे यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखना है.
कौन सा रहा? थोड़ा जूम करता उसको. Positioning to benefit from the India's positioning to benefit from the India's structural development, structural travel and upscale upcycle. SAMI benefits from the triple demand engine, infrastructure-led mobility, office. So I can highlight this: infrastructure-led mobility, office-led corporate demand, and consumption-led travel. ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बता दिया है. I can avoid that. So I can quickly say कि SAMI में grow हो रहा है, तो there are 3 reasons that it is growing. ऑफिस लेड डिमांड सब हमने ऊपर बता दिया है. Additionally, recovery in foreign tourist arrival is expected to enhance the ARR mix and premium demand. With a strong pipeline, premium tie-ups, and concentration in high-growth markets, SAMI is well poised for sustained RevPAR, ARR expansion, and long-term earning compounding. ये हो गया मेरा. अभी ये सब मैंने भी AI से ही लिखा है, बट AI को क्या प्रॉम्प्ट डालना है, क्या लिखना है, बिकॉज इस पे फिर क्वेश्चन आएंगे. FTA कितना है, बैंगलोर में कितने होटल्स है, इसके कितना ग्रोथ हो रहा है होटल्स का, कौन सा सबसे विच होटल हैज द हाईएस्ट ARR, वहां पे और कौन से कॉम्पिटिटर्स है. सब ये सब क्वेश्चंस बाद में आएंगे. Sir, in conclusion, suppose everything is good in the economic supporting sector is all going in favor of the company. Still, valuation shows the current market price is more than the targeted price. नहीं तो शशांक, then you don't have to research on that company. उस पर रिपोर्ट बनाना ही नहीं है. You have to keep it on hold. So let's say if I was and you were my associate and तुम बोलते कि सर मैंने पूरा रिसर्च तो कर दिया और अब ये वैल्यूएशन इतना हाई आ रहा है, तो शशांक, this is not the report that we show to our clients. Sir, Don't actually, I've made a report on Radico Kaitan, valuation report, means valuation. So the current price is around 3,200 or 3,400, right? But my targeted price shows 2,600 to 2,700 according to comparable analysis and DCF analysis. So the company is good, means everything is good, premiumization is happening, and the sector is also supporting 8 to 10% is growing. Everything is good, but still I will not make a report, right? You will make a report, and keep, and the point the stock declines, that is the point you start selling. That is the point that, so from that point you start pitching it to the client. That's it. Means in the opening line I will start, I will not recommend. Opening line में मैं लिखूंगा कि I will not recommend this stock and all. No. So you don't have to publish that report. So let's say if I tell you, Shashank, you make a report. Let's say you are my client, and I said I want to invest the money. तो तुम मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर sell this stock. तुमने गलत stock ही choose किया. ऐसा है. तो तुम report बना के रखते हो. It is not been published. It is just your research part. So the point first you think now the valuation change, फिर तुम publish the report. Okay, got it. So the first step is valuation, right? Sorry. The first step to make the report is valuation. Is valuation. Yeah. Okay. Now what Okay, happens? Sir. Valuation is one point. Whenever you say it is overvalued, company is never overvalued. It is the industry that is overvalued. Okay. Company का एक growth होता है. अगर see, if you think that industry will grow at a higher pace, so that valuation the company will re-rate ना. Do you have that conviction कि सर ये re-rate हो जाएगा? ऐसा भी हो सकता ना. Because DMart भी 100p पे ट्रेड हो रहा था, उसके बाद भी वो डबल हुआ. Dixon Technology trading at 150p, उसके बाद भी डबल हुआ. Yes, तो तुमने गलत आइडिया ही गलत चूज किया. ऐसा है. तुमने मैं पूछा राधिको कहता चूज ही क्यों किया, इंडस्ट्री में तुम ऐसा क्या देख रहे थे अलग. ऐसा मेरा क्वेश्चन आएगा तुम. ओके करेक्ट. कि इंडस्ट्री में डू यू थिंक दैट ये 10 नहीं अभी 20% से इंडस्ट्री ग्रो होने वाला है, या राधिको कहता ऐसा कुछ कर रहा है जो बाकी इंडस्ट्री नहीं कर रही है. ओके सर, एक्चुअली सर वो इक्विटी वो है ना, इक्विटी ब्रांड वाला एक साइट है जो पब्लिश है
इक्विटी ब्रांड रिसर्च, हाँ। तो उधर लिखा हुआ था कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो अराउंड इन दिस सेक्टर, अल्कोवेव इंडस्ट्री में 8 to 10% ग्रो करेगा। एंड रेडिको काइतन के एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इफ द इंडस्ट्री विल गो अराउंड 8 to 10%, देन द कंपनी विल ग्रो 2.5x और डबल ऐसा करके। तो मैंने वैल्यूएशन में जैसे कि 8 to 10% था, उसका पिछले साल का 31% ग्रो किया कंपनी रेवेन्यू। तो इस बार मैंने लिया कि 27-28 टेपरिंग कर 26-27% ग्रो करेगा। तो उस हिसाब से मेरा वैल्यूएशन आया 2700 अराउंड। हाँ तो नहीं, वैल्यूएशन किसे डीसीएफ से किया? डीसीएफ से भी किया और कंपैरेबल एनालिसिस दोनों मिला के किया, मतलब ईबी बाई बीटा लिया और That's डीसीएफ मेथड फॉलो किया। if you want to do a quick analysis, रेडी को कहता बोला तुमने? हाँ, यस रेडी को सर। बोला तुमने? हाँ। हाँ If you want to do a quick analysis, चलो स्क्रीनर पे देख लेते हैं। If it's रेडिको खेतान, ठीक कैसा है? If you think it will grow by how much? 2x। हाँ, मतलब मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से मैंने लिया है थोड़ा सा कंजर्वेटिव कर 25% अराउंड। मतलब पैड बट ग्रोथ कितना है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years? पैड ग्रोथ कितना है हमारा? अच्छा, ये लोग ने 20% दिया, ठीक है। अज्यूमिंग ये 20% से ग्रो होता है फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। 20% ग्रो इज यूजुअली योर 20 times पी, ठीक है। इसका पी कितना पे ट्रेड होता है? अच्छा, इसका पी पे नहीं होगा, आई थिंक इट ईवी बाई बिडा पे होगा। हाँ सर, ईवी बाई बीटा में ही मैंने किया था। ईवी बाई बिडा पे होगा ये 44। सो इट इज ऑब्वियसली इट इज सेम है ना, 20% पे ग्रो हो रहा है और उसको 40%, 40 times वैल्यूएशन मिल रहा है, तो ये ऑलरेडी प्राइस इन दी है ना, फिर तुमने क्या रिसर्च किया? तो अगर तुम बोल रहे हो कि सर ये 20 नहीं 30% से ग्रो होगा, देन आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो क्यों। वरना तो ये फेयरली वैल्यूड है, तुमको भी फेयरली वैल्यूड ही आएगा। स्ट्रेट क्वेश्चन है। यूजुअली फैक्टर्स होते हैं, ईवी बाई EBITDA या पी पे भी होता है। इफ यू ग्रोइंग एट 10% एंड कंपनी लाइक रेडिको कहता है यूजुअली यू गेट 2 times द पैट ग्रोथ या 2 times द EBITDA ग्रोथ। मैक्स इज 2 times। उसके ऊपर तो देना था, इट इज लोअर वैल्यू। तो तुम बोल रहे हो ऑलरेडी सर 20% पे ग्रो हो रहा है एंड इसका ईवी बाई EBITDA ऑलरेडी 44 पे है, तो तुमने कंपनी पे रिसर्च ही क्यों किया? या फिर रिसर्च करके रखो, जिस दिन स्टॉक गिरेगा उस दिन तुम्हारे थीसिस बाहर लेके आओ, ऐसा। ओके। ओके ओके, ये ऐसा है। तो इट इज तो रॉन्ग। मैंने चूज किया, पता है? आई विल टेल यू व्हाई डिड आई चूज सैमी। सैमी ना, आई एम एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एट 30%। क्यों? क्योंकि उसके इतने सारे होटल्स आने वाले हैं, उनका ARR इंक्रीज होने वाला है, EBITDA मार्जिन विल इंक्रीज। इवन इफ द कंपनी इज ग्रोइंग एट 10%, द मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। सॉरी, योर EBITDA इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। इसका ना ईवी बाय EBITDA देखोगे तो 16 times ही है, मतलब 1 time भी नहीं है उसका ग्रोथ का। दैट इज व्हाई आई चूज। आई कैन गो रॉन्ग, इससे भी उल्टा भी जा सकता है यहाँ से, बट दिस इज द रीजन आई चूज सैमी। वही IHL आई हैव नॉट चूजन टू रिसर्च। IHL में ये प्रॉब्लम है, जो ये व्हाट इज द प्रॉब्लम। सर IHL का आपने ग्रोथ भी 20% एक्सपेक्टेड है, बट इसका ना तुम अगर ईवी बाई EBITDA कभी देखोगे ना, ये ना ऑलरेडी 40 times पे ट्रेड हो रहा, 35-40 times। सो मुझे नहीं लगता इसका ग्रोथ होगा यहाँ से। तो मतलब मुझे चाहिए कि IHL टू ग्रो एट 40%, या चलो 20 है तो 25-30% पे ग्रो होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल एट दिस स्केल। इसका इतना बड़ा स्केल है, दो सर वैसे कंपनी आप अच्छी है। सर सॉरी सॉरी आपने जैसे अभी बोला, सॉरी सर, सर आपने जैसे अभी बोला कि अगर स्टॉक अगर नीचे गिरता है देन यू पब्लिश योर इन्वेस्टमेंट थीसिस एंड ऑल। तो क्या ये डेली डेली बेसिस में चलता है क्या? यस यस। हम तो हर 10-15 दिन बाद कभी कभी, क्योंकि कुछ आया अच्छी गिरा तो कुछ तो आया होगा ना, तब गिरेगा ना एरिको केतन। कुछ तो कुछ चीजें हुए होगे तब गिरेगा, या फिर ये वॉर जैसा कुछ हो गया तो कुछ हुआ। जब ओके। वापस रिकवर होगा तब तुम्हारी थीसिस लिखनी है क्या होने वाला है। या फिर रेडिको ने ऐसा कुछ किया जो तुमने अभी तक अज्यूम नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होगा। लेट्स से वो बोलते कोई नया प्रोडक्ट ले, मार्केट शेयर गेन हो गया रेडिको में, उनका एक प्रोडक्ट है बहुत चल गया। या कोई कंपनी है जैसे UBS है जो बाहर मार्केट से बाहर हो गई, ऐसा भी हो सकता है ना। तो रोज तो ध्यान तो रोज रखना होता है क्या चल रहा है स्टॉक पे। मतलब ओके। इनफैक्ट मैं जब एनालिस्ट था तो क्वार्टर में 4 से 5 बार तो मैं एनालिस्ट से, सॉरी, उसके CEO से बात करने को,
4 से 5 बार, पहले हमारी टीम में सब लोग मिलजुल के, उससे नहीं तो उतने कॉम्पिटिटर से। तो हमारा काम क्या होने का, दिन में रोज भाग के आके रिसर्च करके मैनेजमेंट कनेक्ट्स, वो बोलते हैं ना B2B बिजनेसेस, मैनेजमेंट का रेडिको इज ऑल्सो B2B बिजनेस। तुम जाके रेडिको से नहीं करते, रेडिको बेचता है होटल्स पे। तो रोज रोज यस सर। जाके हर एक इंडस्ट्री या हर एक सेक्टर में रोज फोन पे बात होने की हमारे, ऐसा है, मेरी या फिर मेरे मैनेजर की। तो Sir, सर one quick आपने जो ये question. इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाया है सर, हाँ, इसमें सर आपने क्या क्या फैक्टर यूज किया, इकोनॉमी, सेक्टर और कंपनी का, फिर कैसे एक्सपेंशन करेगा एंड ऑल? बस फोर यस, टू फाइव बुलेट बुलेट पॉइंट्स फिर खत्म? 4 to 5 बुलेट्स पॉइंट एंड उसका एनालिसिस। अभी सब में देखोगे, सब में डेटा पॉइंट है, सब में तुम देखोगे ना, हर एक इसमें डेटा पॉइंट है। और ये डेटा पॉइंट मुझे ऐसा गूगल करके नहीं मिला है, ये इधर कितने होटल्स है मुझे पता है ना कि ये ग्रोथ पाइपलाइन में कौन सा होटल आता है। तो मैंने वो PPT में जाके देखा है कि ग्रोथ पाइपलाइन में ये पाइपलाइन है, इसके 132 रूम्स अवेलेबल है। क्योंकि AI मुझे ये सब नहीं दे पाएगा। AI को बोलो इन्वेस्टमेंट रिसर्च लिखो तो वो डेटा पॉइंट्स कभी नहीं दे पाएगा। बैंगलोर में इतने सारे ऑब्जर्वेशन हो रहे, ये मुझे एक PPT में मिला, वो मैंने AI को बोला कि मुझे सिर्फ रिफ्रेम करके दो। ये मैनेजमेंट 36% ऑफ द डीज इन टॉप सिटीज, ये मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में मिला, ये लाइन, वो मैंने सब मिक्स करके बताया, ऐसा। यस सर। सर वैसे भी मैंने जब रेवेन्यू ग्रोथ का प्रेडिक्शन किया तो मैंने पीपीटी इन्वेस्टर, पीपीटी का यूज किया, अर्निंग कॉल्स का यूज किया एंड उसका रिसेंट क्वार्टर्स का ग्रोथ वगैरह देखकर देन आई डिसाइडेड कि वो 25-26% अराउंड ग्रोथ करेगा ऑन अ करेंट बेसिस। तो सर यही तो उसमें मतलब। केसेस थे, उसमें आई थिंक रेडिको में केसेस आएंगे ना, कितने केसेस तुम एस्टिमेट कर रहे हो। रेवेन्यू डायरेक्टली फोकस नहीं होता है, केसेस फोकस होते हैं, कितने केसेस ये बेचेगा, वो केसेस में कौन सा केस बिक रहा है ये ज्यादा। डायरेक्टली तुम 10% 11% नहीं ले सकते, ठीक है, ये याद रखो। तो केस का अगर बिक रहा है तो एवरेज कॉस्ट कितना होता है केस का, तो तुम क्या एस्टिमेट कर रहे हो, केसेस ग्रो होगा या एवरेज कॉस्ट ग्रो होगा। एवरेज कॉस्ट ग्रो होगा तो उसका वॉल्यूम्स उसके कौन से प्रोडक्ट से ग्रो होने वाला है, ऐसा ऐसा होता है रेवेन्यू फोरकास्टिंग। ओके। ओके, मतलब वो थोड़ा डीप हो जाता है व्हेन यू एक्चुअली आर इनटू दिस। फिर उसके साथ साथ अगर तुम बोल रहे हो इसका एवरेज ग्रो होने वाला, व्हाट अबाउट इट कॉम्पिटिटर्स, वो किधर है, उसका क्यों नहीं ग्रो होगा फिर। अगर रेडिको तो मेरा यूनाइटेड स्टेट का क्यों ग्रो नहीं होगा। तो रेडिको के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो ये ग्रोथ ला रहे हैं, तुमने बोला ना 20% ग्रोथ होगा, ऐसे कौन से यस प्रोडक्ट्स है सर। विचार प्रीमियम चल रहे प्रोडक्ट्स थे। अभी उसके ज्यादा सेल होने स्टार्ट हुए पिछले ईयर से, हाँ, तो इसके वजह से उसका ग्रोथ होगा। तो हाउ मच परसेंट ऑफ द पार्ट इज फ्रॉम प्रीमियम प्रोडक्ट, उस पे फिर EBITDA पे कितना कंट्रीब्यूट होता है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का। सर मतलब आई जैसे हैव अगर डन रिसर्च, बट आप जिस हिसाब से बोल रहे हो कि उसके अंदर, बट मैं हाँ, उतना डीप नहीं जा पाया। वो मतलब दिस इज होता माय है फर्स्ट मतलब। प्रोजेक्ट। एक्चुअली आई एम स्टडिंग नाउ ACCA, मेरा अभी एज 23 है। तो अच्छा, ओके। एट अ फाइनल लेवल आई एम स्टडिंग। उसके साथ मैंने जब AFM पढ़ा था तो आई थॉट कि चलो फोरकास्ट करके देखते हैं कैसे एक्चुअली वर्क करता है। तो ठीक है। थोड़ा सा हाँ, गूगल वगैरह में देखकर या तो फिर ऐसे वैसे देखकर, ऐसे फ्री में ऐसे मंगाकर, तो ऐसे आई स्टार्टेड। सो ऐसे ही एक्चुअली मैं करके। एक चीज बताता हूँ, मैं बता तुमको, सिर्फ तुमने किया है ना, तो मैं बताता हूँ, मेरा एक मॉडल था जो हमने किया था। जस्ट टेल यू हाउ वी हैव फोरकास्टेड द रेवेन्यू फॉर सेमी होटल्स, यही कर रहे थे हम। सॉरी, EIS था, एक क्लास में हम कर रहे थे। ये हमारा EIS का मॉडल है यहाँ पे। ये हमारा मॉडल है, ग्रोथ देखो यहाँ पे, 5.4, 12.9, 12.8, 28, 23, ये ऐसे अचानक से रैंडम नंबर है। तो मैंने रैंडम नंबर मैंने नहीं डाले, ये मुझे आए हैं मेरे एनालिसिस से। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे है, मैंने क्या एनालिसिस किया है, ये रूम रेवेन्यू, ठीक है, ये रूम रेवेन्यू कैसे आया मुझे, सिया, रूम पर रेवेन्यू, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। अभी ये मुझे कैसे मिला 8 to 9%, ये इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है। रेफ पार मतलब इंडिया में एवरेज ग्रोथ 8 से 10 तक का हो रहा है कोई भी होटल्स में, ये रेंज में 10-15 हज़ार का जो होटल्स है उसका रेफ 8% से ग्रो हो रहा है, 8 से 10% के आसपास। तो मैंने 8% लिया है। अच्छा, ये ग्रोथ हुआ, इससे मेरे पास रूम्स कितने हैं, टोटल रूम्स जो ऐड होने वाले हैं, ये मुझे आया मेरे PPT के नंबर से।
ये मेरे उसने ऑलरेडी बोल दिए थे कि डोमेस्टिक में इतने, इंटर में इतने होने वाले हैं, इतने रूम्स ऐड होने वाले। फिर वो रूम्स में ऐड होने वाले, उसके बाद उसका ऑक्यूपेंसी 78% रहता है एवरेज, जो मैंने इतने साल से देखा है। तो उसकी ऑक्यूपेंसी हो गए 3200, अज्यूमिंग 365 डेज का डेज होते हैं, तो उसका रेवेन्यू आता है मल्टीप्लाई बाय ऑल, एंड देन यू गेट द ग्रोथ रेट, देन यू गेट द रेवेन्यू। तो बेसिकली यू ब्रेकअप ऑल द यू ब्रेक अप, थिंग्स यस। एंड तो क्योंकि मुझे कल पूछा गया ना ये मेरा 5% का ग्रोथ कहाँ से हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, सी क्योंकि मैं ऐसे चेंज करूँ ना, 8 से 10 करूँ ना, तो मेरा चेंज हो जाएगा। सी यहाँ पे तीसियो तो नहीं है खा पा रही है। इफ आई टॉक अबाउट ऑक्यूपेंसी रेट, तो मेरा ऑक्यूपेंसी, अगर मैं बोलता हूँ कि चलो ऑक्यूपेंसी कल ग्रो हो जाएगा, मेरा 85 80 हो जाएगा, चलो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ता हूँ, या सिंस मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि अरे लोग ज्यादा घूमने जा रहे हैं, ऑक्यूपेंसी रेट 80 हो गया, तो देखो ये मैं 80 करूँ तो ऐसा 7.7% ग्रोथ आएगा, एंड दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट माई वैल्यूएशन जो मैंने यहाँ पे किया है। जो हमने इसमें नहीं किया था, एक तो इट विल डायरेक्टली, सब लिंक्ड है, विल डायरेक्टली इम्पैक्ट माई वैल्यूएशन। अच्छा मैंने किया नहीं था इसमें, ये मॉडल में, मैं यस सर, नीचे यस। किया, आई थिंक मैंने, वो तो सर लिंक्ड होगा तो वो तो हो ही जाएगा, वो तो आपको हाँ कुछ तो हो करना नहीं। जाएगा। हाँ कहाँ पे, तो हाँ इधर था शायद, नहीं मैं कहाँ पे तो किया था, हाँ ये रहा, यहाँ पे मेरा वैल्यूएशन था, तो चेंजेस डायरेक्टली ऐसा है। 398 मैं वहाँ से सर कुछ भी आपने चेंज करूँ। सर आपने अभी एक जन को बोला था कि फाइनेंशियल मॉडल यू प्रिपेयर्ड अराउंड 1 और 2 आवर में हो जाता है। बट हाँ सर आपने रेवेन्यू ब्रेकअप किया, सिनेरियो एनालिसिस किया, सब कुछ किया, 1 और 2 आवर में कैसे किया? क्योंकि नहीं, मुझे 15 to फाइनेंशियल 20 मॉडल बिना दिमाग के 1 घंटा लगता है, दिमाग लगाने को तो तुमको 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। ऐसा है कि ये सब नंबर आए कहाँ से ना, ये मैंने क्या बेसिस पे किया है ग्रोथ, ऐसा है। तो अभी जो आप बोल रहे थे कि 1 घंटा में बन जा रहा है, वो आपने फिर कैसे बनाया? खाली पिछले साल का फोरकास्ट देख, हिस्टोरिकल हाँ जैसे अगर अगर मैं यहाँ से बनाऊँ ना मॉडल, यहाँ से नंबर्स डाल के, तो मुझे 1 घंटा भी नहीं लगेगा मॉडल बनाने। नंबर्स डाल दिए, फोकस कर लिए, ऐसे कोई रैंडम नंबर से लिंक कर दिया, डीसीएफ हो गया। वो तो सर अभी एवरेज फिर, वेवरेज लेकर आप कर लेंगे, बहुत इजी है वो करना। हाँ वो तो बहुत मतलब ईजी है। फिर मैं क्या अकाउंटिंग। करूंगा, फिर मेरा ये रेवेन्यू का शीट है ना, वो मैं सिर्फ लिंक कर दूंगा, ये शीट इससे नंबर से। तेरा कॉस्ट शीट भी है मेरा यहाँ पे, ये कॉस्ट है तेरा, इसमें भी कॉस्ट है, तो सिर्फ मैं कॉस्ट वहां पे लिंक कर दूंगा, हो जाएगा, फिर मेरा ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे ना। यस सर। तो उसका बैक एंड फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रंट एंड तो ये बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। मॉल बना के कितना टाइम लगता है, 10% ले लो ना, ऐसे रैंडमली 10% ले लो, ओके। ऐसा है। इसको टाइम नहीं लो, इसको टाइम लग। So बट the उसकी पीछे assumptions that will be taken, it needs to be referred from the annual reports, the conference calls, right? यस, एनुअल रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल, न्यूज़पेपर्स। अभी ये जो 8% मैंने लिया है, 8% इज नॉट फ्रॉम एनी एनुअल कॉन्फ्रेंस कॉल, इट इज बिकॉज आई एम नोइंग दैट इंडस्ट्री से 8 to 9% पे ग्रो हो रही है इंडिया में, रेफ पार इज ग्रोइंग, और वो भी ये सेगमेंट का रेफ पार। एंड ये भी मुझे डायरेक्टली नहीं मिला, सी हाउ आई गॉट दिस, मुझे सिर्फ रेवेन्यू टोटल कीज थे मेरे पास, ऑक्यूपेंसी रेट था, में से मैंने ऑक्यूपाइड रूम्स निकाला, हिस्टोरिकल डेटा ये, फिर मेरे पास रेवेन्यू था, रूम रेवेन्यू, ये भी मुझे पीपीटी से मिला, तो रूम रेवेन्यू मैंने मल्टीप्लाई किया, मिलियंस में था ये। तो अगर मेरे पास इतने रूम्स है, तो मुझे एक रूम पे कितना कमा रहा हूँ मैं, एक रूम पे आई एम अर्निंग 38 lakhs, बट रूम तो 365 डेज, मतलब ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइड डेज इज 365, तो मैं पूरे रूम का कमा रहा था, मुझे तो पर डे चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 365, एंड ये मोटा मोटा मुझे एक आया कि एक दिन में ये कितना कमाता, फिर वो मैंने फोकस की। तो ये ऐसे थोड़ा बहुत यू हैव टू पुट, वरना डायरेक्टली तो मैं यहाँ से कर ही सकता था ना, 10% ग्रोथ, चलो हिस्टोरिकल देख लूँ मैं, 16% ग्रोथ लेके तो फोरकास्ट ही कर सकता था ना मैं। फिर इनका जो मेजर एम्प्लॉय बेनिफिट था, एम्प्लॉय बेनिफिट भी एक्सपेंसेस ही, व्हाट आई फाउंड आउट दैट इसके टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज में उनकी सैलरी मुझे मिली, ये पीएनएल से, एम्प्लॉय कॉस्ट मुझे पीएनएल से मिला, सो आई डिवाइड इनटू, मल्टीप्लाई इनटू मिलियंस,
तो मुझे पता कि एक एम्प्लॉय की इतनी सैलरी है, तो टू पार्ट्स, एक में एवरेज ग्रोथ लूँ, एक में एम्प्लॉयज बढ़ाऊं। अभी तुमने देखा होगा यहाँ पे मैंने 20% एम्प्लॉयज बढ़ाई है। ऐसे क्यों? इतने एम्प्लॉयज बढ़ते हैं क्या? सोचो मैं क्यों किया होगा ये। सर यू टोल्ड ना कि वो एक्सपेंशन वगैरह होगा तो एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो यू एस्टिमेटेड पाइपलाइन दैट। का, ये रहा पाइपलाइन, क्योंकि मेरे पास पाइपलाइन है, मुझे पता है इतना होने वाला है आगे जाके। ऐसा है कि यहाँ पे तुम देखोगे अचानक से, अच्छा अब वो भी कैसे आई है पाइपलाइन, तो मुझे फोकसिंग आ गया। भी ये भी 20% क्यों लिया मैंने? पता है क्यों लिया मैंने? मैंने ना ये एम्प्लॉयज पर रूम हिस्टोरिकली देखा था कि एम्प्लॉयज पर रूम कितने होते हैं। तो मुझे पता है 2 एम्प्लॉयज होते हैं पर रूम। लेने को तो मैं यहाँ पे 30 40 50% भी ले सकता था ना, बट फिर 2.9 हो गया। तो मैंने उसको मेंटेन करने के लिए 20% रखा है। इनफैक्ट अभी मैंने चेंज किया था, तो यहाँ पे सिंस मैंने रेवेन्यू चेंज किया था सब चेंज हो गया, तो मुझे 2.2 2.3 के आसपास ही रखना है। ये रहा। ये भी आई शुड बी अराउंड 5%। इसीलिए ऐसा है। सो कोई तुमको पूछे मॉडल में तुमने ये सब क्यों लिया है रैंडम नंबर्स, सर मैंने कुछ सोच समझ के लिया है कि हिस्टोरिकल अगर मैं देखूं तो हर एक रूम के पीछे 2 एम्प्लॉयज लगते हैं, इतना हिस्ट्री बता रहा है। तो अगर मेरे इतने होटल्स बढ़ते हैं तो मेरे रूम्स एम्प्लॉयज इतने होने चाहिए। और फिर ये सेल्स पर एम्प्लॉय, ये रहा, ये 4 हो गया। ये तो इतना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक एम्प्लॉय तुम्हारा 4 टाइम सेल कर रहा है, 4 रुपए का सेल कर रहा है, 4 रुपए भी नहीं 4 मिलियन का सेल कर रहा है, इज नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा अभी? एम्प्लॉयज बढ़ाऊंगा या सैलरी बढ़ाऊंगा? देखिए एम्प्लॉय पर रूम तो आ गए मेरे, बस मुझे सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, विल रिड्यूस। ओके, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, बट ये तो थोड़ा डीप है, ये हम सब करते हैं कोर्स में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो टाइम लगता है सब करने को। ये अचानक से मैं ना एक दिन तुमको बोलूँ पढ़ने को, तो तुम ऐसा नहीं बना पाओगे। टेक्स लॉट ऑफ टाइम, हम इतना रोज रिसर्च करते हैं, रोज बातें करते हैं, तब जाके मुझे किधर समझता है। एंड देन आई टेल नो स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस जो हम कोर्सेज कर रहे हैं, इट इज नेवर कि कोई करिकुलम है वो फॉलो कर रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है उसकी बात करो। करिकुलम तो किसी को भी कर सकता है। आज मैं सैमी कर रहा हूँ, शायद से कल जाके कोई मैं और इंडस्ट्री कर लूंगा। मुझे तो एफएमसीजी अभी अच्छी लग रही है। होटल का ग्रुप तो मैं देख लिया, FY 28 में आएगा। तो तब तक क्या करना है? तब तक होटल को ट्रैक करो, होटल रिपोर्ट लिखो, कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ो, फाइनेंशियल मॉडल अपडेट करो, कीज पे ध्यान रखो, कोई नए डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया पे उस पर ध्यान रखो। वही हो रहा है। ओके। Sir, one quick question. या How Bloomberg terminals are used by fund managers and research analysts for conducting their researches inside AMCs? डेटा पॉइंट नीरज, टू फाइंड डेटा पॉइंट्स। That's it. Bloomberg आर यूज टू फाइंड इंडस्ट्री डेटा पॉइंट्स, जो यूजुअली यू डोंट गेट इट ऑन गूगल एंड एआई। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू मारुति इज सेलिंग सिलेरियो, सो मारुति सिलेरियो ने सबसे ज्यादा सिलेरियो कौन से स्टेट में सेल हुआ है? एग्जाम्पल, वो डेटा तुमको गूगल पे नहीं मिलेगा। हु आर द सप्लायर्स ऑफ मारुति? मारुति को कार्स को, सॉरी, मारुति को टायर्स कौन सप्लाई करता है, मिरर्स कौन सप्लाई करता है, ये सब डेटा ब्लूमबर्ग पे मिलता है। Okay. एंड देयर आर ट्रेडिंग हाउस वेल रिसर्च एनालिस्ट, हम यही करने के, या फिर किसी और का रिसर्च है, ग्लोबल रिसर्च है, दैट वी गो एंड रीड। वहाँ पे जैसे रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं, ये जो मैं रिपोर्ट्स तुमको बता रहा हूँ वो वहाँ पे पब्लिश होता है। यू कैन फाइंड रिपोर्ट्स कि बाकी एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, यू कैन चैट विद डिफरेंट एनालिस्ट, ये सब है। सर वन थिंग, सर आपने अभी बोला तो जो रिपोर्ट आपने बनाने के लिए बोला था, सर उसमें अराउंड 30-40 पेजेस थे। ओके, बट मैंने वो राडिको काइतन का जब बनाया ना, तो मैंने जाकर मनी कंट्रोल में एक एनालिस्ट का पढ़ा था। वो तो सिर्फ हम्म, 10-12, मतलब 10-12 पेजेस थे। तो उसमें फर्क क्या है, मतलब ये 40 पेजेस मतलब और 10-12 पेजेस में? नहीं, इंस्टीट्यूशन लेवल पे इट इज ऑलवेज 30 40 पेज। तुम वो पढ़ा हो रिटेल लेवल का होगा, मनी कंट्रोल पे रिटेल लेवल के रिसर्च मिलते हैं। रिटेल मतलब एक ऐसा है, तुम एक रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, तुमको कितने पैसे डालने हैं, तुमको लेट्स से 10 15 हज़ार इन्वेस्ट करना है। तुमको तो क्विक चाहिए ना रिसर्च, तुम थोड़ी 50 पेज रीड करोगे।
बट मैं अगर 10 करोड़ डाल रहा हूँ मैं तो सब पढ़ूंगा, ऐसा है। ओके, तो गॉट मुझे इट। वो डिटेल रिपोर्ट होता है। एंड इतना डिटेल देके इन्वेस्टर वैसे भी इतना डिटेल रिपोर्ट देके तुम एक रिटेल को दे नहीं सकते। मतलब अगर मैं इतना डिटेल बता तुमको दे दूं तो मुझे लगे सर मैंने मैं डालना ही पढ़ूंगा पांच ही हजार नहीं रुपये सर, ऐसा है। ऑब्वियस बात है। हाँ ऐसा है। तो वो बात होती है। इसके लिए फर्क होता है रिटेल और इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट्स में। ओके ओके सर। है कि तुमको चाहिए कि सर बाहर में गया मुझे पता स्टॉक ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला, मुझे क्या करना है तुम्हारे डेटा पॉइंट्स का, ये रिटेल माइंडसेट होता है। ओके ऐसा सर। है। तो इसके लिए वो फर्क होता है दो रिपोर्ट्स में। बट बेसिकली अगर कोई इन्वेस्टर अगर बना रहा है, इन्वेस्टर नहीं मतलब इक्विटी रिसर्च अगर कोई बना रहा है, तो ही विल मेक अ 40 पेजेस रिपोर्ट। देन यस। उसके बाद फिर वो अल्टर करेगा कि रिटेलर को क्या चाहिए। फिर क्या देना है, यस। वो ओके तुम्हारे पास जो रिपोर्ट्स आते हैं वो मे भी स्नैपशॉट्स होते हैं सिर्फ ओके सर। क्विकली बताने के लिए। ओके ओके, सो इन्वेस्टमेंट थीसिस वाज दिस। तुमको भी अगर वन पेजर बनाना है तो दिस इज हाउ यू मेक योर रिपोर्ट्स। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग, डेटा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मेरा रिपोर्ट जो पढ़ेगा ना उसको पता है कि ये डेटा पॉइंट मैंने कहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। एंड सेकंड पेज पे यू कैन राइट अबाउट द कंपनी इफ यू वांट। सेकंड पेज पे ना वो भले वन पेजर बोलते हैं, तुम सेकंड पेज पे थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बता सकते हो, पाइपलाइन कितने हैं, कंपनी का ग्रोथ क्या हुआ है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के कितने होटल्स या कितने प्रोडक्ट्स आउटलाइन है, मार्केट शेयर कितना है, वो सब तुम एक पेज पे लिख सकते हो। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थीसिस, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट योर व्हेन यू आर सेंडिंग योर रिपोर्ट उसको कुछ बारे में पता है। क्विक इनफ वन पेजर जो तुम लिख सकते हो, एक पेज के एक पेज तक ही बस। एंड उसमें अगर चार्ट्स हो तो बेटर, चार्ट्स या फोटोज वीटोज हो गए तो बेटर। सिर्फ लिखना 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 इज बोरिंग। जैसे मैंने ये बनाया था, लेट्स से आई विल टेल यू, अगर मुझे टॉरेंट किसी को प्रेजेंट करना था तो मैं टॉरेंट ऐसे ही प्रेजेंट करूंगा। अच्छा अभी इसमें 3 सेगमेंट्स थे, इंडिया ओवरव्यू, फिर टॉप 6 प्रोडक्ट्स कौन से थे उसके, यूएस ओवरव्यू, एंड उसके थोड़े इंटरनेशनल बिजनेसेस। तो ये 3 का मैं एक शॉर्ट बना के वहां पे प्रेजेंट कर दूंगा। सब नहीं डालूंगा, छोटे मोटे चीजें मैं वहां पे सेकंड पेज पे डाल दूंगा। टोटल प्रोडक्ट अभी देखो इसमें मैंने उसके प्रोडक्ट्स के नाम किए, प्रोडक्ट्स का कितना सेल होता है, कैसे वो इंडिया सेगमेंट कैसे डिवाइडेड है। तो ये मैं एक पेज पे क्विकली कर सकता हूँ अगर तुमको, इफ यू आर सेंडिंग इट टू एनी रिक्रूटर्स। तो वेदर यू आर पार्ट ऑफ आर्के एडवाइजरी और नॉट, अगर तुम कभी तुम्हारा रिपोर्ट सेंड कर रहे हो या तुमको कोई आया है ओपनिंग जहाँ पे दे सेट यू टू राइट इन्वेस्टमेंट थीसिस, तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखते हैं एंड देन यू राइट अबाउट द कंपनी इन शॉर्ट इन वन पेज क्विकली, ताकि योर इन्वेस्टमेंट थीसिस सपोर्टेड बाय व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। क्योंकि इसमें आई विल टॉक अबाउट सैमी। सैमी में क्या हो रहा है, सैमी में जो मिड स्केल सेगमेंट है ना, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 17%। तुम बोलोगे सर उसी में ग्रोथ हो रहा है, तुमको पता भी होना चाहिए ना कि 17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वो तुम्हारे फिर यहाँ पे चार्ट्स में दिख जाएगा। या अक्षित। Yeah, hi sir. So actually, I have a question like if we took any of the company, many of the research houses and AMCs have different point of views. Like if someone is selling, someone is buying because it is a zero sum game. यस। So like if I am like researching any company and I have to make any point of view of suppose of revenue growth or profit growth. So, but like, what should I look upon? So, like there are suppose already on that company, 10 research reports are already there in that market. So, suppose 5 are saying, 6 are saying it should be a buy, or 4 are saying it should be a sell. So, in that scenario, what should I do, sir? Like, matlab, should I consider all the 10 reports for my analysis, or should I do my own analysis basis on the like company's annual reports, industry research, and basically like the what are the management is saying? Because, yes, sir, every time management is also not very familiar or about their stock or industry because they also reread their analysis or their observations. So what? So can you please, sir, guide in this? What should we do in this scenario? See, now when you talk about research report, first of all, you don't have to read reports of other brokers. Never. Other brokers' reports, if you're reading, just take the data points on that report. You don't have to take the analysis.
if your thesis are been influenced by others, then you have not done any research. No, you don't have to think what other analysts are saying. It has happened so many times in the industry that my manager was against me saying that Rishabh, this stock is overvalued. Okay, it is his analysis. I think it is undervalued. The market will tell who is right and who is wrong. You have to be on one point. Either you on the buy side on this side. Either you want to buy the stock, either you want to sell the stock. And reasons for that, supported by data points. You don't have to think about analysts. Because in this market, no one is right. Even Warren Buffett have gone wrong many times. So it's up to you. And how well you present your thesis, that is important. Defend your thesis rather. So, Whenever sir, like, how can I build more conviction towards my analysis or towards my stock so that I can be, matlab, like, more certain that, yeah, it will happen. Like, yeah, I know that I can also go wrong, but my analysis also can go wrong. But how can I double sure it? Like, how can I increases my probability of not doing wrong? see, it will come with experience, na, Akshat? If that was the case, every research analyst would have been billionaire if he was right. Oh, Na? yes. So sorry to interrupt. Is there anything from your part you're going to explain more since No, sir, it's done. It's done. You can leave. travel again? Yeah. Thank you so much, sir. Welcome, sir. Yeah. So actually, I was saying that uh, if that was the case, then every research analyst would have been a billionaire if he knows if he was double sure of the stock that will go up. It will come after experience. I became right after 7 years in the industry. After 7 years doing a research on one stock, that stock outperformed. It might happen after 2 years also. And now when it outperforms, you need to be convinced that majority of your funds are invested in that stock. So how can you be sure? Let's say, Akshay, if you are giving any exam, you are saying that, sir, I want to be double sure that I will pass. What will you do? Sir, I think practice is the only way. That's all. That's all. And even after saying you cannot be sure that you will pass the exam. It's just that you are 80-90% sure that, sir, I will do it. I'm confident enough. But that confidence comes when you have done something, Yes. right? It's like that. Okay. So, sir, like, I have to ask, like, so, if I have to pick any company, so can you please tell me, or like, would you sharing the like the sources or authentic sources from where we can have information, and other than the con calls and the annual reports, from where should we get the information about the industries? Because like there are many sites or research houses that publish on industries also and sectors also. So, what Yes. should we consider? Because everyone has their own numbers. See, so whenever you write numbers, you have to mention the source. Where have you taken it from? Let's say Okay. FMCG gets you from Kantar. Kantar gives about FMCG. Enerog gives you about real estate and your hospitality sector. Or CM gives you about auto. Even Vahan data gives you about auto. Then Okay. in pharmaceutical, there is IQVIA, there is AIOCD. There are various industry websites which gives you that kind of data. Okay. This is what I have done it. I have followed it. So when you see an annual report, usually you see there is a source given below it. Just observe it. Whenever you see any data point on the annual report, there's always a source given. Yes, that is your website that you look at. Okay. Okay. But sir, how can you trust other website? Because it is not authentic, right? Because ट्रस्ट तो नहीं करना है guys. कि ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं करना है तुमको. because Trusting sir, is only for audited numbers. सर आपने अभी बोला ना कि आई सर्च ऑन दिस साइट्स एंड ऑल. हाँ. तो अभी द ऑथेंटिक साइट इज आई गेस एनएससी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और इंडियन ब्रांड इक्विटी. वो तीन चार साइट ही आई नो कि वो ट्रस्टेबल है. मतलब जहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स है, जहाँ पे मैं सोर्स अगर मेंशन करूंगा तो दे विल नॉट डाउट मी. तो मैं बोला ना ये सब सोर्सेस है वो एनुअल रिपोर्ट में सोर्स मेंशन होता है. ओके. ओके बोला ना वो होता है. तो अगर वो सोर्स मेंशन है तुमने वहां से लिया है, तो यू कैन से कि एनुअल रिपोर्ट में खुद कंपनी है सोर्स से डेटा ले रही है. ऐसा ओके. ओके. एनुअल रिपोर्ट होता है, पीपीटी होता है. यहाँ पे देखना हमेशा सोर्स लिखा होता है नीचे एनुअल रिपोर्ट और पीपीटी कि उनको भी कहाँ से मिलेगा डेटा. कंपनी वालों को भी डेटा कहाँ से मिलेगा. वो लोग थोड़ी रिसर्च करते हैं. वी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स उधर ही कंपनी रिसर्च करती है कि फॉरेन में कितने टूरिस्ट है, कितने आ रहे हैं वो इंडिया में. उनको भी तो कोई तो वेबसाइट से वो देती है ना. ऐसा.
Okay, thank you so much, sir. Okay. Okay, guys, any more questions? So we are starting with the challenge tomorrow. If you want to still register, you can let me know. They're in the group, or you can just message me. I will send you the forms. Okay. And Vimraj is saying, can you tell me what is the average return you get in the stock? I have not sold my stock, Vimraj, till now. It's been around 5 years. I have not sold any of my single stock. अभी recently बेचा था मैंने, मारुति बेचा था. That is what I made some 30% CAGR for the last. ठीक है, अभी तो क्या कोविड था, तो I will not brag on that. सबने ही कमाया वैसे तो. But I was heavily invested at the time of COVID. अभी हाँ, अभी पूछोगे तो मैं लॉस में हूँ. लॉस में वजन I will not sell the stock till I don't find 5-10 years के बाद ही मैं बेचूंगा. 15-20% is max that you get. कोई कुछ भी रिसर्च कर लो, 15-20% is max you get in the long term. उसके ऊपर तुमने कमाया तो अप्रिशिएटेड, तुम सच में अच्छे एनालिस्ट हो. एंड ऐसा नहीं है that reports that stocks, return should be on of investing 1,000 rupees and 10,000. If you are investing like a crore rupees in a stock and वो 30% बढ़ा, then it is things to be brag about कि सर मेरा स्टॉक डबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया. अगर तुम बोलते सर मैंने 1-2 लाख रुपए डाले हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसको कोई मीनिंग नहीं. सर एज यू Growth, टोल्ड कि आपने 5 साल से अभी तक कोई स्टॉक नहीं बेचा है, मतलब नॉर्मली, तो हाँ सर एक एक तो स्टॉक ऐसा होता है ना कि इट विल टच द बेंचमार्क और उसके ऊपर तो वो हाँ जाने वाला ही नहीं हो रहा है. हाँ मतलब हिस्ट्री अगर देखो तो उसके ऊपर वो जा ही नहीं रहा है, तो स्टिल हाँ यू होल्ड द स्टॉक. हाँ. मैं तो मतलब मैंने बोला ना, मारुति बेचा मैंने. अच्छा, मैं बिकॉज मारुति. हाँ. बिकॉज रिसेंटली मैंने पीएनबी हाउसिंग बेचा, उसका 1,000 समथिंग था. तो मैं उसका हिस्ट्री डाटा देखा कि उसका जा ही नहीं रहा है उसके ऊपर, मीन्स 1100 तक हार्डली जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है. तो एज अ हिस्ट्री मैंने देखकर उसको भेज दिया, मैंने उसका कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया. बट वॉट यू डू, मतलब आप फंडामेंटल नहीं एनालिसिस नहीं, भी करते हो क्या हर स्टॉक का? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू वैल्यूएशन एंड सबका रिसर्च रिपोर्ट बनाना ऑल I will स्टॉक्स. tell you व्हाट what philosophy I undertake. Whenever I say high हो गया, मतलब I'm not talking about stock price कि stock price high हो गया उसके ऊपर नहीं जा रहा है. It is the revenue. मतलब मुझे लगता है मारुति यहाँ पे पीक आउट हो गया है, इसका रेवेन्यू यहाँ पे 10% से ज्यादा ग्रो नहीं होगा, बिकॉज इतना बड़ा बेस हो गया उसका, या फिर इंडस्ट्री ही टर्न अराउंड हो गई है. तो वो होता है. इट इज नेवर अबाउट द स्टॉक प्राइस. मैं नहीं बोल रहा कि मारुति मैंने लाइफ टाइम हाई पे बेचा. वो 13-14 हजार जाके आया, मैंने तो 12,000 पे बेचा था, 12,500 पे मैंने बेचा. क्योंकि जिस दिन जीएसटी रेट कट आया था, स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक चेंज हुआ था. हो गया. मारुति इतना बड़ा प्लेयर है, 4 लाख, वो खुद ऑर्डर उसके फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ कैसे करेगा? साउंड आउट की पूरा हो गया मारुति का. अभी ऑब्वियसली आई विल नाउ ट्रैक इट कि आगे क्या. अभी भले वे 14 का मुझे कल 17 पे भी मिले, और मुझे लगता है 17 के मतलब उसका रेवेन्यूज यहाँ से 20% होगा, तो मैं 17 पे भी लूंगा. आई डोंट थिंक कि चलो यार मेरा 3,000 रुपये चले गए. बट मैंने कब बेचा? क्योंकि आई थिंक इट इज पीक्ड आउट फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रोथ रहे, नॉट इवन रेवेन्यू, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, कि 5-10% के ऊपर मुझे नहीं लगता मारुति ग्रो होगा. ये मेरा एनालिसिस है. मीन्स ऐसा. अल्टीमेटली आपने फिर फंडामेंटल पे जाकर ही डिसीजन लिया, राइट? हाँ हाँ, यस यस. प्राइस इज जस्ट एन बाई प्रोडक्ट ना. हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा. ओके, अभी मैं राइट. वैसा एग्जांपल में देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट अ कंपनी विच इज टू बी ग्रोन. ये जैसे सैमी है, मुझे लगता है इसमें ग्रोथ होगा. हाँ, ये मैं कब बेचूंगा? तब मुझे पता है कि इसके बहुत होटल्स हो गए, अभी ये ग्रो होने वाला है नहीं यहाँ से. या फिर ये अभी यहाँ से भी नीचे जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी गिरना चालू हो गया. तो आई डोंट केयर, आई एम नॉट सेलिंग इट. जब तक मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं बेच रहा उसका. आई एम होल्डिंग इट. ओके और जिस दिन सर, मुझे लगे कि ये खराब हो गया, तो मैं इसके आधे भाव में बेच दूंगा. मुझे नहीं चाहिए कि मेरा भाव करेक्ट. आधा हो गया. ऐसा है, आधा हो गया तो ठीक है, मैं निकल जाऊंगा. आई डोंट सी वैल्यू इन दिस. ओके सर. सर ऐसा है. इन योर पोर्टफोलियो अराउंड फिफ्थ, समझ लीजिए आप 20-30 स्टॉक्स रखें, तो एवरी डे यू ट्रैक ऑल 20-30 स्टॉक्स की, मतलब, या फिर सोच रहे, या फिर बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल ना कि आप सबका फंडामेंटल देखो फिर डिसीजन लो, फिर आपको काम भी करना है, फिर ट्यूटर भी करना है, सब कुछ करना है, तो हाउ डू यू, मतलब डिसीजन कैसे लेते हो? सो आई हैव पीपल वर्किंग फॉर मी. थोड़े बहुत है, मेरे भी फ्रेंड्स है जो हम काम करते रहते हैं.
पढ़ता रहता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, मेरे पोर्टफोलियो में 20-30 स्टॉक्स है ही नहीं, मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक होंगे गिन के। नहीं ठीक नहीं, है, जो हेविली इन्वेस्टेड है, एग्जाम। उसमें हेविली इन्वेस्टेड है, बाकी सब ऐसे ही है, टाइम पास। ओके, वो ऐसे किसी ने बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला, ले लिया, एंड दैट इज व्हाट। सो माय 90% ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू 10 स्टॉक्स। उस पे तो तुम मुझे कुछ भी पूछ लो, रात को 12 बजे उठ के पूछ लो क्या चल रहा है, मुझे सब पता होगा उसके बाद। ऐसा है, गॉट इट। क्या होने वाला है। बाकी बाकी है स्टॉक्स, बाकी वो ऐसे ही है जो बस ले लिए थोड़े से, किसी ने बोला बढ़ रहा है, या मार्केट में कुछ देख लिया, या फिर डिफेंस सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कुछ रिसर्च कर ही नहीं सकते। हाँ, सेक्टर ग्रो हो रहा है तो ले लो, ऐसे टाइप से। फिर स्टार्टअप्स कंपनीज हो गए, स्विगी जोमेटो जैसे हो गए, रखे हैं थोड़े बहुत, जस्ट टू सी की है ई कॉमर्स गेम कैसा प्ले होता है, समथिंग लाइक दैट। न्यू एज कंपनीज है थोड़े बहुत, उसमें आए ना आए आई डोंट केयर, गया गया, नहीं गया नहीं गया, इट्स लाइक दैट। ओ, Okay, guys. So see you tomorrow in the morning call. Those who have registered, others, all the best for your interviews. If you require anything, you can always reach out to me. मेरा I'm there on LinkedIn, WhatsApp पे भी है, ग्रुप पे. Okay, and I keep on posting jobs. तो देख लेना YouTube पे मेरे. And अभी आज तक मैं कल से also posting conference call के highlights जो है वो मैं कल से post करने वाला हूँ on the video format. Okay, in 1 minute या 2 minute video जहाँ पे you get a sense of क्या हो रहा है actually conference call में क्या हुआ है. Yeah, Vimraj, please DM me for the challenge. Thank you, everyone. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you.